10 गुना बढ़ेगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपका नजरिया क्या है, आपका विजन क्या है, इसमें प्राइवेट सेक्टर कितना है और इसमें पब्लिक सेक्टर कितना होगा? और मेरा यह सीधा आरोप है कि यह बिल सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए ही है, निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिए है। तो मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश में क्षमता है, हमने 220 मेगावाट की प्लांट लगाए हैं, 540 मेगावाट का प्लांट लगाया है, ककरापार में हमने 700 मेगावाट का प्लांट लगाया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, 700 मेगावाट प्लांट को एक वर्क हॉर्स बनाइए, और जो रिएक्टर हैं फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ कोरिया, अलग अलग देशों से मत लाइए, जो हमारे देश में हम आत्मनिर्भर हैं। 700 मेगावाट का प्लांट हम लगा रहे हैं, गुजरात में लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जानते हैं, प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं। उससे आप प्रेरणा लीजिए और स्टैंडर्डाइजेशन कराइए। ये वेंडर ड्रिवन बिल मत कराइए। कंपनियों द्वारा जो बिल आप ला रहे हैं, आपने 3 कानून लाए थे कृषि क्षेत्र में, आपको वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो भी प्राइवेट सेक्टर से आपको ऑक्सीजन मिल रहा था। इस बिल का वो भविष्य नहीं होना चाहिए। सर, तो इंडिजिनस वर्सेस इंपोर्टेड, हमारे देश में पहला रिएक्टर अमेरिकी सहायता से तो बना, तारापुर। उसके बाद में हम आत्मनिर्भर हैं, हम सेल्फ रिलायंट हैं। सारा फ्यूल साइकिल, उसका नियंत्रण हमारे हाथों में है, भारत के हाथों में है, हमारे वैज्ञानिकों के हाथ में है। ये प्राइवेट कंपनियां जो ला रहे हैं, मंत्री जी, प्राइवेट कंपनियों को कहिए आप ये 700 मेगावाट एटॉमिक एनर्जी का प्लांट लीजिए और पावर प्लांट लगाइए। वो क्यों नहीं लगाते हैं? वो फलाना अमेरिकन कंपनी, साउथ कोरियन कंपनी, फ्रेंच कंपनी पीछे पीछे भागते हैं। तो आप स्टैंडर्डाइज करिए और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को आप बढ़ावा दीजिए। मैं जानता हूं कि आप देना चाहते हैं। 700 मेगावाट को वर्कहॉर्स बनाइए और उसी के आधार पर आप 100 मेगावाट के रास्ते, 100 गीगावाट के रास्ते पर चलिए। सर, दूसरी बात, एसएमआर 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 का मंत्र चलाया जा रहा है। एसएमआर माने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। सर, हमारे देश में तो भारत स्मॉल रिएक्टर है। 220 मेगावाट के करीब 15 या 16 रिएक्टर हमने लगाया है, 20 ऐसे रिएक्टर होंगे। उसको स्टैंडर्डाइज करिए, भारत स्मॉल रिएक्टर लगाइए 220 मेगावाट का, और अगर आप 100 मेगावाट का लगाना चाहते हैं, उसी के आधार पर उसका इवोल्यूशन कराइए। वो असली आत्मनिर्भरता है, ट्रू सेल्फ रिलायंस वो है। मैं जानता हूं कि हमारे देश में 3 या प्राइवेट कंपनियां हैं जो फायदा लेंगी इस बिल का, उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूं। सब लोग जानते हैं वो 3 या 4 कंपनी कौन है। उन 3 कंपनियों को कहिए, मंत्री जी, आप भारत के टेक्नोलॉजी को लगाइए, 700 मेगावाट का टेक्नोलॉजी आप एटॉमिक एनर्जी से लीजिए और प्लांट लगाइए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तो आप ला रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कैपिटल लाएगा, प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी तो नहीं लाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एटॉमिक एनर्जी के हाथ में है, ज्ञान तो उनके हाथ में है, क्षमता तो उनके हाथ में है, कुशलता तो उनके हाथ में है। प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ पैसा लाएगा, सिर्फ निवेश करेगा। पर उनको कहिएगा कि अगर आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना है तो ये 700 मेगावाट का प्लांट या 220 मेगावाट का प्लांट आप लगाइए, आप देखिए कितने लोग आएंगे। सर, मैंने 3 फेज कार्यक्रम का उल्लेख किया। होमी भाभा का नजरिया था, और आज हम होमी भाभा को हमें याद करना चाहिए, क्योंकि वो निर्माता थे, भीष्म पितामह थे हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के। होमी भाभा ने कहा था 3 फेज होना चाहिए। पहला फेज यूरेनियम होगा, दूसरा फेज प्लूटोनियम थोरियम होगा, और तीसरा फेज थोरियम यूरेनियम होगा। मैं सरल भाषा में बोल रहा हूं, टेक्निकल भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, सरल भाषा में बोल रहा हूं। आज फर्स्ट फेज तो हमको मास्टरी मिल गई है,
सेकेंड फेज थोड़ा रुका पड़ा हुआ है, कुछ देरी हुआ है, कुछ विलंब हुआ है। मंत्री जी जानते हैं सेकेंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी तक हम कमीशन नहीं कर पाए हैं, पर दुनिया का 1/4 125% थोरियम रिजर्व हमारे देश में है। हम यूरेनियम डेफिसिट थोरियम रिच कंट्री हैं। थोरियम का इस्तेमाल हम कैसे करें? तो मैं मंत्री जी आपके ज्ञान में लाना चाहता हूं, हमारे देश के सबसे जाने माने न्यूक्लियर इंजीनियर अनिल काकोडकर, जो हमारे एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने 2 लेख लिखा है पिछले कुछ 3-4 महीनों में। मैं आपको दे दूंगा, टेबल पर रखूंगा। और उन्होंने कहा है कि थोरियम का इस्तेमाल हम कैसे करें। थोरियम का इस्तेमाल हम इस विचार के थे कि थोरियम का इस्तेमाल हम सेकेंड फेज में करेंगे, उसके बाद हम थर्ड फेज में जाएंगे, पर सेकेंड फेज में डिले हो गया है। तो काकोडकर जी का यह मानना है, और इससे डॉक्टर काकोडकर से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनके पास जो रिएक्टर इंजीनियरिंग की ज्ञान है, मैं समझता हूं कि दुनिया भर में किसी एक व्यक्ति में है, वो डॉक्टर काकोडकर के पास है। और वो कहते हैं कि समय आ गया है कि थोरियम को फर्स्ट फेज में भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम सीधा थर्ड फेज में जाएं, बाईपास करें, लीप फ्रॉग करें थर्ड फेज को। क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, हमारा अंतिम मकसद क्या है? हमारा अंतिम मकसद है हमारे देश के थोरियम का इस्तेमाल करना, यूरेनियम का नहीं। यूरेनियम का तो हम हमेशा आयात करते रहेंगे। और ये 2008 का समझौता करार जो है, उसका एक सकारात्मक असर हुआ है कि हम अलग अलग देशों से यूरेनियम ला सकते हैं। फ्रांस से लाए हैं, कजाकिस्तान से लाए हैं, और देशों से लाए हैं। पर हम यूरेनियम बाहर से खरीदेंगे तो एनर्जी सिक्योरिटी आपको चाहिए, ऊर्जा सुरक्षा अगर आपको चाहिए, यूरेनियम पर नहीं पर थोरियम पर हमें निर्भर होना चाहिए। थोरियम का भंडार हमारे पास है, केरल के ट्रावनकोर बीच सैंड मोनाजाइट एक बहुत बड़ा भंडार है। इसीलिए तो 1950 में इंडियन रेयर अर्थ्स की स्थापना की गई थी। तो मंत्री जी, जो हमारे देश के विशेषज्ञ हैं, उनके विचार को सुनिए। ये जो बाहर से प्राइवेट कंपनियां आती हैं और कुछ ना कुछ हमें ज्ञान देती हैं, उसके पीछे में हम मत पड़े। ये प्राइवेट कंपनियां मिलते रहते हैं, प्राइवेट कंपनियां के रोज अखबार में पढ़ता हूं, प्राइवेट 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 प्राइवेट। पर जो हमारे पास क्षमता है, जो हमारे साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं, उसका नजरअंदाज मत कीजिए। मंत्री जी, 2009 में मुझे सौभाग्य था कि मैं ऊर्जा मंत्रालय में MOS था। सुशील कुमार शिंदे जी हमारे कैबिनेट मंत्री थे, और हमने पहली बार NTPC और NPCIL के बीच में जॉइंट वेंचर कराया। जो आप कह रहे हैं ना, हमने कराया 2015 में, ये 2009 और 2010 में कराया गया था। एक चीज, इतिहास को वापस लिखने में आपका कोई मुकाबला नहीं। इतिहास, असली इतिहास को भूलने में और नया इतिहास लिखने में आपसे कोई मुकाबला नहीं। आप उसमें बहुत माहिर हैं। तो मंत्री जी, 2010 में NTPC और NPCIL के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ था। ऐसे जॉइंट वेंचर को प्रोत्साहन दीजिए, अलग अलग कंपनियों को प्रोत्साहन दीजिए, और अलग अलग कंपनियों को यह कहें कि अगर आपको न्यूक्लियर प्लांट लगाना है, हमारे देश के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जरूरी है, तो हमारे टेक्नोलॉजी के आधार पर ही लगाइए। ऐसे तो कुडनकुलम में 6 रिएक्टर, रशियन रिएक्टर लग रहे हैं, वो ठीक है, वो निर्णय ले गया, हुआ था जो हुआ है। पर आगे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हों। हमारे क्षमता पर हमें हमारी रिएक्टर लगने हैं। आज भी मंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, फ्रांस में
सारा न्यूक्लियर रिएक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल का है और फ्रांस में 70% बिजली न्यूक्लियर एनर्जी से आता है। 70% इलेक्ट्रिसिटी comes from nuclear sources and all nuclear plants in France are owned by the government। और फ्रांस में जो हर साल न्यूक्लियर परमाणु स्रोत पर निर्धारित बिजली का उत्पादन होता है वो एनपीसीआईएल की तुलना में 7 गुना है। इसका माने ये है कि एनपीसीआईएल को और भी बढ़ावा दे सकते हैं। एनपीसीआईएल को और मजबूत कीजिए, एनपीसीआईएल को और ऑक्सीजन दीजिए, और साधन दीजिए, और निवेश कीजिए, और जरूर आप निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दें। पर काकोडकर साहब ने क्या लिखा है अपने लेख में, उन्होंने एक लेख में उन्होंने साफ लिखा है कि it is worth recognizing that most of what is contained in this article is developed by our own laboratories like the Bhabha Atomic Research Center, the Indira Gandhi Center for Advanced Research, etc. That needs to be pursued. The private sector, while it needs to be mobilized to scale up the program, should play a secondary role. The reverse would cause irreversible damage. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष जाने माने एटॉमिक इंजीनियर डॉक्टर काकोडकर साहब लिख रहे हैं। तो अंत में मेरे 1 मिनट बाकी है। मेरा कहने का यही एक मकसद है मंत्री जी, आपकी कई मजबूरियां हैं। अमेरिका की मजबूरी है, विदेशी कंपनियों की मजबूरी है, हमारे निजी कंपनियों की मजबूरी है। मजबूरी में बिल मत लाइएगा। इस पर और विचार विमर्श, मैं जानता हूं कि आप 1 साल से इस पर विचार कर रहे हैं, पर और विचार करने से कोई आसमान नहीं गिरेंगे। इस पर और विचार होने दीजिए, और लोगों से मशवरा कीजिए, और लोगों की राय लीजिए। पर एक चीज याद रखिए मंत्री जी, अगर हमने अपने पब्लिक सेक्टर का नजरअंदाज किया, अगर आपकी मंशा ये है कि पब्लिक सेक्टर को हम नीचे गिराएंगे और उसके स्थान पर हम प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन करेंगे, ये हमारे देश के हित में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का मैं समर्थक हूं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंजन नहीं बन सकता। इंजन पब्लिक सेक्टर होना जरूरी है। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को बनाया तो मैं समझता हूं जो विजन था होमी भाभा का, जो विजन था सभी विशेषज्ञों का, उसका आप बुरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हो। अंत में मैं कहूंगा, इस मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे एटॉमिक एनर्जी कार्यक्रम में कई लोगों का योगदान रहा है, कई लोगों का, और मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं क्योंकि हम ऐसे नामों को भूल जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू और होमी भाभा और विक्रम साराभाई को तो जानते हैं, राजा रामन्ना, होमी सेतना, एन.बी. प्रसाद, एम.आर. श्रीनिवासन, ए.के. गांगुली, आर.के. असुंडी, वी.डी. अथावले, जगदीश शंकर, डी.एन. वाडिया, और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्म प्रकाश, जिसका मैंने जिक्र इसरो के समय में मैंने किया था जब चंद्रयान पर बातचीत हो रही थी, कि ब्रह्म प्रकाश हमारे एकमात्र ऐसे मेटलर्जिकल इंजीनियर थे जिन्होंने इसरो में भी योगदान दिया है और एटॉमिक एनर्जी में भी योगदान दिया है। तो ऐसे वैज्ञानिकों को हम याद रखें। ये सब किसी भी देश में काम कर सकते थे, पर वे भारत लौट आए और भारत में उन्होंने काम किया। थैंक यू। पब्लिक सेक्टर में काम किया, सरकारी सैलरी पे काम किया, और उसको प्रोत्साहन जवाहरलाल नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्रियों ने। थैंक यू। अभी उस रास्ते से मत हटिए,
उसी रास्ते पर जाइए मंत्री जी, उसी रास्ते पर जाइए। Thank you. थैंक यू। Thank you so much. Honorable Srimati Kiran Chaudhary ji. Thank you, sir. Sir, I rise in support of the Shanti Vidhek 2025 और मैं बताना चाहती हूँ कि ये केवल एक कानूनी सुधार नहीं है, ये बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की प्रति जो है एक बहुत बड़ा कदम है। It is a historic and landmark bill, sir, which has been brought in. और अभी हम अपने माननीय सदस्य को सुन रहे थे, बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने भाषण दिया और उसमें कहा, पूरा पाठ पढ़ाया पिछले 50 सालों में क्या हुआ है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ उनको कि जो फ्रैगमेंटेशन, जो पॉलिसी पैरालिसिस जो है जिससे हम जूझते आ रहे थे, आज उसी को सुदृढ़ करने के लिए ये बिल जो है ये लेकर आया जा रहा है। This bill is to end the fragmentation and create one modern nuclear law. This is why this bill has been brought in, and that is why I term it as a very historical and a landmark bill. Sir, this bill repeals old, scattered regulations, replaces them with a single unified and modern framework covering licensing, safety approvals, liability, and compensation. And sir, I would like to add that yes, the genesis of this nuclear program has been very long, there's no doubt about it. But because of the policy paralysis, we could not move forward. Shri Atal Bihari Vajpayee ji, our former Prime Minister, laid the solid foundation with a clear focus on national security and public safety. Sir, and now under the leadership of our Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi ji, this vision has been concretized and it is being taken forward too. Sir, this bill permits limited private and joint venture participation in nuclear power generation, subject to strict licensing, safety and security approvals. I would like to tell the honorable member that when they cry wolf over privatization, we know how to protect the nation and we know how to protect the interest of our country. So, sir, in this bill, very stringent, strict licensing, safety and security approvals by the central government have been incorporated in the bill. Critical areas such as fuel reprocessing, enrichment, and spent fuel management remain exclusively within the domain of the government of India. So this is not going into the private hands. So I want to assure my colleague of this. Sir, and this is a very balanced approach because we have seen during the past years that in the electricity regulated, private participation made India the third largest power producer. So it's an example that is before us. And in telecom too, liberalization transformed a state monopoly into one of the world's most affordable networks. So, sir, all this, when my colleague cries wolf over privatization, I would like to tell him that there are ample safeguards and he needn't be worried because under the Honorable Prime Minister's stewardship, there's no question of any kind of this thing with the security of our country. So at the same time, we all know that nuclear energy is the core pillar of sustainability. And it is projected to be doubled by 2040. And it is being driven by manufacturing, urbanization, AI, and data services. So coal still accounts for 70% of electricity generation, making decarbonization impossible without a firm non-fossil base load. So, sir, this Shanti bill strengthens India's nuclear framework, enabling large-scale deployment of nuclear power
and small modular reactors, as the Honorable Minister had said, and I would like to congratulate and compliment him in bringing forth such a comprehensive bill. Sir, it stabilizes grid stability, energy security, achievement of COP30 targets towards global warming. We are committed to this, sir, the world over. And as we know the emissions that's happening in our country, we have to keep them and rein them in. So this is a very important aspect. And also, sir, progress towards Viksit Bharat, which is the aim and which is the aim of our Honorable Prime Minister. Sir, sustaining 24/7 electricity for every Indian is the goal that our government is looking forward to. Over the last decade, rural electricity availability has risen from 12 to 14 hours to 20 to 22 hours, and in urban areas, almost 20 to 24 hours. So this is a very big achievement, sir. And, sir, I would also like to say that defense is a very major sector. We have seen this time how important it is to be self-reliant in our defense sector, sir. Until now, no action had been taken. Now, for the first time during the BJP government, under the leadership of Honorable Prime Minister, it is now, we are bringing forth the defense reforms, and it's a proven fact, sir, that private participation, when it was allowed in the defense sector, yet today the majority of its defense equipment domestically and exports defense products are being exported globally, sir. So these kind of doubts when it is raised from the opposition side, and especially when it concerns the security of our country, as an army officer's daughter, as a daughter of a brigadier who has bled for this country, my heart also bleeds when they talk like this. Sir, from political hesitation to strategic confidence, this is the mantra of the Modi government. Sir, after the Pokhran nuclear tests, some leaders in the Congress questioned the nuclear assertion. And it's a matter of record, whatever they might try and show us. This is also a matter of record. And it reflected a deeper hesitation to embrace strategic strength. So, sir, now for the first time, with confidence, we are moving forward. And I don't understand why they have a problem with this. So it reflects the Modi government's unambiguous belief that nuclear power is a pillar of national strength and development. And, sir, I have no hesitation in saying that during the UPA's time, there was complete apathy. A whole series of this thing can show us that there was total apathy. And now, in the NDA's time, energy revolution is taking place. We are moving forward into the 21st century. We are not sitting on our backs and not doing anything about it. So, sir, in 2009, I would like to tell them, 2009, the UPA promised 63 GW of nuclear capacity by 2032, but delivered less than 7 GW. Prime Minister Modi inherited a broken nuclear pipeline, but he reversed this with his strength and his conviction. He added 21 reactors, increasing generation from 34 to 56 million units. This is all a part of record, sir. And along with it, sir, that is the reason why the world looks towards us today. It's not charity that they are coming and working with us, because they have confidence now in India that we are capable, that we are self-reliant, hum atmanirbhar hain. There is no doubt about it. And that's why Kundakalam it's there with Russian technology. Jaipur is set to become the world's largest nuclear plant with French reactors, and the American and Japanese cooperation which they were talking about, which was once stalled, has now taken over again. So, sir, I would also like to rebut some of the issues which my honorable colleague raised, that this privatization endangers national security. So I've already talked about the examples of electricity and telecom. When the private sector comes in, how much of a boost that we get. Sir, fuel enrichment, reprocessing, spent fuel management remain exclusively under government control. Nobody can take that away from us.
private participation is only and only limited to and regulated and fully supervised by the central government and the AERB. I would like to put this on record. Another rebuttal is, sir, that foreign players will compromise sovereignty. I don't understand that, sir. Sovereignty is protected by law and control and not by fear, sir. We are strong. हम आत्मनिर्भर हैं. हमने दूसरों से थोड़ा डरना है कि कोई बाहर से आ जाएगा तो हमारा वो सब कुछ ले जाएगा. We know how to control and we know how to work this thing forward. And this because, sir, and we also know, sir, that nuclear energy is the backbone of clean growth. It's very, very important for the future. We can't look back on 50 years what happened. We have to look towards the 50 years in future if we want our country to take its stand in the world nations. So, along with that, nuclear power is carbon-free, reliable, and essential to meet our climate commitments and industrial growth, as we all know. And then another issue which they raised was nuclear power is unsafe. Sir, this fear belongs to the past. We all know that India has the strongest nuclear safety records globally. The world acknowledges us. Shanti Bill, this bill strengthens safety norms, aligns them with international standards, and promotes small modular reactors, like the Honorable Minister told us, which are safer, quicker to build, and globally acceptable. Sir, my honorable colleague also said that the bill weakens liability and protects corporations. I would like to rebut him saying this allegation is completely misleading. Under the UPA rule, liability confusion stalled projects for a decade, sir. What a shame. Something which ought to have been done a decade earlier and where our country would have been today was completely stalled. This bill, sir, provides legal certainty, victim compensation, and accountability, which is the most important thing. And it ensures that projects move forward without compromising public safety. Sir, Honorable Sir, I would like to say that this bill, 2025, despite all my opposition colleagues crying wolf over every issue, I would like to say that this bill is a trajectory which will take our country to the path of development in the future. And also, it stands for clarity over confusion, which was the norm of the day at that point in time. Confidence over hesitation, because they were always hesitating, karna hai, nahi karna hai, kya karna hai, nahi karna hai. All the time, this was the issue that was going on. Victim answer, progress over paralysis. This is the mantra of the BJP government under the honorable stewardship of our Prime Minister. And sir, I would like to say that this is, like I said, it's a historic legislation. And I would request all the honorable members, in the interest of the country, they should all support the bill. Thank you very much. Thank you. Honorable Srimati Sagarika Ghoshji may speak in Bengali in between. Thank you, Mr. Vice Chairman. On behalf of my party, All India Trinamool Congress, I rise to speak on the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025, the so-called Shanti Bill. Sir, this bill brings neither Shanti nor security. It brings Ashanti, it brings Bipod, it brings Khatra, it brings grave danger. This bill brings danger disguised as development, cronyism disguised as reform, surrender disguised as strategy. This bill is not just flawed, this bill is fundamentally dangerous, sir. Let me be clear. We are not debating whether India should pursue nuclear energy. As the honorable member before me said, India has always pursued nuclear energy responsibly for decades. India has always been a responsible nuclear state. But as a country, are we now prepared to abdicate our sovereign responsibility, gamble with public safety, and place one of the most sensitive sectors of the nation at the mercy of crony capitalism and government-friendly oligarchs, as well as foreign pressure? Sir, this bill is not reform, it is recklessness,
This bill is not for the public, it's for profit. This bill is not about sovereignty, it's about surrender. The ruling party must also remember that you, Mr. Minister, once accused the Manmohan Singh government of a sellout on the civil nuclear deal, on the Indo-US civil nuclear deal. Today, forget sellout. You are rushing through this crucial bill without any parliamentary oversight, simply because, as your leaders say, ab ki baar Trump sarkar. That is why you are rushing through this bill. So the government wants to produce 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047 under the Viksit Bharat program. But the way it is trying to do this is the privatization, in fact, the oligarchization of nuclear power. Privatization can be benign if there's a level playing field, if there are checks, if it's open for all. But in the name of privatization, this government consistently promotes oligarchization, rule of the oligarchs. The Shanti Bill removes restrictions on private entry by allowing any company or person authorized by the central government to establish and operate a nuclear installation. This is a huge policy shift, as was pointed out, and ends 7 decades of state exclusivity over nuclear power. Let's admit that the scale of investment needed for setting up such industry can only be undertaken by the high-profile cronies of this government. And the question arises, is cronyism the reason why this government is paving the way for them? Why not go in for public-private partnership instead? And we all know, sir, who this government's favorite oligarchs are. We all know that the hum do, hamare do approach is what this government has adopted. From the vision of the father of our nuclear program, Homi J. Bhabha, to the resolve shown at both Pokhran 1 and 2, India's nuclear program has always been deliberately kept under public control. This is because nuclear power, sir, can be so deadly, that the cost of failure is absolute. One mistake can poison the land, the water, and lives for generations to come. Nuclear energy is not normal commercial activity, sir. It is not telecom, it's not aviation, it's not even defense manufacturing. It is a strategic national asset bound up with national security, and the risks are existential for humankind. The risks are catastrophic. Should profit maximization and cost cutting be the aim of such a sector? At the core of the bill is a highly diluted liability regime, a reworked liability framework under Chapter 3, which caps the maximum compensation for any single nuclear incident, with the operator's liability limited to installation-specific ceilings set out in the second schedule. So the doctrine of absolute liability, held by the Supreme Court in the 1984 Bhopal gas disaster, is being limited. The bill repeals the existing Civil Liability for Nuclear Damage (CLND) Act of 2010, uprooting decades-old legal protections around nuclear accidents, weakening accountability for suppliers. The liability cap, 300 million special drawing rights, or SDR, a few $100 million, or 3,900 crore, is absurdly insufficient compared to the catastrophic cost of a major nuclear accident. As per the Shanti Bill, the sovereign top-up is discretionary in form and fund design, not automatic, in comparison to what existed under the CLND Act. This means that beyond the limit of 3,900 crore as per the second schedule, the government will be liable. And this is discretionary in function. The liability is discretionary. The clause is thus highly regressive, as compensation beyond the given amount thus becomes optional, leaving communities and victims helpless. The citizen of India will be rendered helpless. Nuclear disasters take place on a vast scale, sir. In the 1986 Chernobyl catastrophe, the property damage was $7 billion, with 350,000 people resettled. In the Fukushima Daiichi disaster of 2011, the cleanup and compensation cost $180 billion, with 160,000 temporarily or permanently evacuated. So why this cap on liability, given the high urban population densities around sites like Tarapur and Kudankulam?
The 2010 Act clearly defined the operator as a government or government company and allowed right of recourse, Section 15, against suppliers for defective components. The Shanti Bill redefines operators to include any company and allows liability transfer via contract, making supplier liability voluntary. The Shanti Bill shifts liability and recourse rules towards contract rather than statute, meaning suppliers can be insulated in the fine print of the contract and victims' ability to seek redress becomes uncertain. This is because contracts will be negotiated from an unequal bargaining position. It is terribly unfair to the victims, potential victims. Removing the provision of right of recourse is nothing but the anti-people playbook of the BJP. You are pro-oligarchy and anti-people. We have seen this play out in Bengal, where you have stopped Manrega and frozen funds amounting to 52,000 crore. What you want is people should have no right of recourse. But Bengal Chief Minister Mamata Banerjee will always stand with the people of Bengal. That's exactly why we started the Kanya Shri scheme, paying 51 lakh beneficiaries from the state-owned funds. Nuclear. But you only understand the language of profit, not the language of the people. Profit and nuclear safety cannot coexist, sir. One rewards cost-cutting, the other demands zero tolerance for error. These are irreconcilable philosophies, and the helpless Indian citizen will pay the price. Nuclear accidents are not imaginary fears. Chernobyl was not the result of mere technical failure. It was weak oversight and political pressure to prioritize output over safety. As a result, human lives were destroyed for generations. For generations, human lives were destroyed. Nuclear radiation does not negotiate. Nuclear radiation does not forgive. Nuclear radiation does not respect contracts and corporate liability clauses. We still remember the photo of the lifeless baby lying in the Bhopal mud. Shanti removes explicit acknowledgement of long-term radiation injury and allows the government to exempt facilities deemed insignificant risk. This is a violation, sir, of the ILO Convention number 115 on radiation protection. The bill also reflects a blind and obsessive push for nuclear expansion without adequate debate on alternatives or consequences. India is blessed with solar, wind, hydro, and storage potential. A responsible energy transition demands balance, not fixation on the one source. Energy security cannot come at the cost of human security. When safety audits slow down profits, which one will be sacrificed, sir? Which one will be sacrificed? Safety audits or profits? When maintenance budgets threaten balance sheets, what will be cut? When emergency preparedness looks expensive, who will take responsibility? The global trend is to strengthen, not weaken safety norms, but this bill, Mr. Minister, is going in the opposite direction to what the global trend is. But the real shocker of the bill is this, sir. This sudden enthusiasm for opening India's nuclear sector coincides very conveniently with the intense foreign pressure, particularly from the United States, to allow private and foreign companies access to India's nuclear market. Under the existing DP IIT FDI policy, private entities in atomic energy can attract up to 49% foreign investment. By removing the government company-only clause, the Shanti Bill enables such FDI. This is startling. Will foreign entities now gain control over one of the most strategic resources of our country? Shame. Is India's nuclear law being rewritten to suit foreign commercial interests? Shame. Is Parliament being asked to legalize what was politically promised abroad? Is national policy being shaped to please Washington rather than protect the citizens of India? Shame. This is a government of मुंह में स्वदेशी, दिल में विदेशी. मुंह में बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, but the dil is videshi. We must again remember the slogan, shouted with great enthusiasm by the leader of this government, Ab ki baar Trump Sarkar. That is what their motto is, Ab ki baar Trump Sarkar. It is sad
that this slogan, Ab ki baar Trump Sarkar, seems to have become a policy for this government. Shame. This is not the Shanti bill, sir. This is the TRUMP bill, the Trump bill, the Reactor Upgradation Management Program, TRUMP. This bill cannot be rushed through Parliament. This bill requires discussion. It requires extensive inputs from stakeholders. It requires a long legislative process. It is a shame that the Prime Minister is not in the House when this crucial bill is being discussed. Citizens of India's lives are at stake. Existentially, humankind is at stake. Nuclear radiation is a possible fallout. How can this bill be passed? How can this bill be rushed through Parliament with 4 hours notice, with a 4-hour debate? It cannot happen, sir. This bill has to be thought about more. There have to be more discussions. There have to be greater consultations with stakeholders. Otherwise, the lives of citizens of India are at stake. The lives of helpless citizens of India are at stake. I want to point out to you one important fact here, sir, that the nuclear installations that exist in our country are all in tribal areas, in the tribal regions. Nuclear mining, primarily for uranium, significantly impacts tribal regions globally, notably in India's Jharkhand, in the Jarugoda area, where indigenous communities, Santhal, Munda, Ho, suffer severe health crises like cancers, deformities, and contaminated water from mining. Are we going to let these helpless, vulnerable communities be at the mercy of profit maximization of oligarchs? Is that what we are trying to do here? This bill cannot go through in this shoddy, rushed manner. It needs much greater deliberation, much greater discussion. I would urge the minister who is sitting here, please rethink. The lives of Indians are at stake. The lives of citizens are at stake. This bill must not go through in this form. We need greater discussion. Thank you, sir. Jai Hind, Vande Mataram, Joy Bangla. Thank you. Honorable Shriman P. Wilson ji. Thank you, Vice Chairman, sir, for allowing me to speak on the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India Bill 2025, ironically branded as Shanti Bill. Sir, this bill will not give Shanti, but will snatch Shanti through nuclear shock. This bill is nothing but a nuclear bomb which threatens our country's peace and security. The nuclear supply chain is thought to be removed from the sovereign functions and from the Union of India government's active oversight. Sir, there is nothing peaceful, nothing sustainable, nothing transformative about this legislation. On the contrary, it is a reckless, dangerous, and deeply flawed attempt to privatize one of the most sensitive and high-risk sectors of our nation, the nuclear energy sector. Sir, one of the most critical, essential sovereign function of an elected government is given to the private sector. Mark my words, the day is not far off when judiciary and legislative function will also be privatized. Sir, let me begin with section 3(1)(c) and (e) of this bill. These provisions allow any company or any person explicitly permitted by the central government to apply for a license to establish and operate nuclear facilities. This blanket opening of the entire nuclear fuel cycle, from uranium mining to waste management to private entities with indeterminate qualification, unclear accountability, and profit as their primary motive. More disturbing is that this bill allows a single composite license to cover multiple stages of the nuclear fuel cycle. That means one corporate entity could control mining, fuel fabrication, reactor operation, and radioactive waste handling. Sir, this is dangerous concentration of power. Such monopolization exponentially heightens systematic risk. When one operator controls everything, a single failure
technical, financial, or ethical, can trigger catastrophic consequences. A private person could threaten the nation's security and still gets things done. Sir, we have already seen what monopolization of a critical sector can do to this country. The aviation sector is a stark warning before our eyes. When Indigo cancelled flights en masse, the country witnessed near paralysis, passengers stranded, fares shooting up overnight, and no alternate capacity to absorb the shock. One company's operational crisis became a national disruption. Let us be very clear, nuclear energy is not like ports, spectrum, liner projects, or airports. This is about fissile material, radioactive waste, and technologies that can devastate entire regions for generations. Handing over operational control of uranium, plutonium, and high-level radioactive waste to private corporations driven by quarterly profits and shareholder pressure is nothing short of irresponsible. So safety cannot be subordinate to the balance sheet. Sir, history is our sternest warning. Chernobyl, Fukushima, and 3 Mile Islands were not accidents of poverty or incompetence alone. They were failures of regulation, oversight, and human judgment. One mistake, one compromised safety protocol, and the consequences were irreversible. Are we prepared to repeat such tragedies on Indian soil? Even within our own country, nuclear projects have faced sustained public opposition due to the seismic risk, untested technologies, and a lack of transparency. Instead of addressing these legitimate concerns, this bill proposes to dilute supplier liability and shift responsibility onto the operators, many of whom now be the private players. Sir, there is a direct assault on nuclear accountability and public safety. Climate change only worsens the picture. With increasing cyclones, flood, heat waves, and rising sea levels, nuclear installations are becoming less safe, not more. In such a volatile environmental context, expanding nuclear power, especially under a private control, is a gamble with national security and human life. Sir, the environmental consequences are equally alarming. Radioactive waste remains lethal for thousands of years. Even today, India does not have a fully proven fail-safe long-term waste disposal mechanism, including for the spent nuclear fuel. This bill proposes expansion without first resolving this historic injustice. This is unacceptable. And yet, sir, the most troubling aspect is this: who stands to benefit? Large private conglomerates, including one of the noted industrialists close to the power corridors, have publicly expressed interest in entering the nuclear energy sector. And suddenly, we have a bill that opens the entire nuclear fuel cycle to private players, allows composite licenses across mining operation and waste, and caps liability at laughably lower levels. Sir, is this a coincidence, or this legislation being tailored to suit corporate entities rather than public safety? This bill appears tailor-made to facilitate corporate entry into a domain that was deliberately kept under the strict public control for reasons of national security and safety. Sir, are we legislating in the interest of people or in the anticipation of the corporate appetite? Nuclear power may have a limited complementary role, but this bill treats it as a silver bullet while privatizing profits and socializing risk. It undermines decades of carefully built safeguards and threatens the sovereignty of our energy policy. Sir, under this bill, the operator liability for a central nuclear installation above 3,600 megawatts is capped at mere 3,000 crores. For smaller reactors, it is even worse, as low as 100 crores, rising in tiers. And the total maximum liability per nuclear accident is fixed at rupees 300 million special drawing rights, roughly about 3,600 to 3,900 crores. Any cost beyond that, the government has to bear the cost, meaning that the Indian taxpayer has to shoulder the negligence of the private players. The Fukushima nuclear disaster of 2011 has already costed Japan more than 200 billion US dollars, that is 16 lakh crores. Some estimate put the figure closer to $500 billion when long-term decontamination, compensation, economic loss,
and health impacts are fully accounted for. The Chernobyl disaster of 1986 is estimated to have a cost up to $700 billion over the decades. It cost nearly 58 lakhs crores. And what message does it send? That a private nuclear operator in India can walk away after paying 3,000 crore, while farmers, fishermen, workers, future generation and taxpayers will pay the remaining price for decades. Sir, 3,000 crore is less than 0.02% of Fukushima total cost. It is not even a rounding error. It is an absolute nuclear disaster. Do we want to gamble with the lives of the people, the safety of our environment, and the future of our nation in the name of corporate-driven nuclear expansion? Sir, for whom are they bringing this draconian bill? Sir, I have clearly highlighted that this bill is a draconian bill and it is not required for the safety and security of this country. Sir, therefore, I urge this House to reject this Shanti Bill 2025 in the present form or refer it to the Select Committee as sought for the opposition parties or to a joint parliamentary committee. Sir, if peace, Shanti, is truly our objective, then let us invest in energy sources that do not carry the shadow of irreversible destruction. Let us choose a path that is genuinely sustainable, democratic, and safe. Therefore, sir, I would only request the House to reject the bill in toto and refer it to the Select Committee as sought for by the opposition party, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Honorable Dr. Sandeep Kumar Pathak ji. थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल चेयर सर। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का और फिर आपका इस पूरे सदन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया गया। ऑनरेबल चेयरमैन सर, कई ऐसे बिल होते हैं जो देश की दिशा तय करती है। ये एक उन बिलों में से है जो इस देश की दिशा तय करेगी। 10 साल बाद, 20 साल बाद जब हम पीछे पलट कर देखेंगे तो हमारी इस पर डिस्कशन होगी कि जब हम प्राइवेट प्लेयर को इंट्रोड्यूस किए थे अपने न्यूक्लियर एनर्जी के सेगमेंट में, तो वो डिसीजन सही था या गलत था। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आगे मैं कुछ बोलूं इससे पहले मैं डॉक्टर होमी भाभा को, डॉक्टर काकोडकर को और सारे वैज्ञानिकों को जिन्होंने इस देश को न्यूक्लियर एनर्जी की दिशा में कमज़ोर से लेकर शुरू करके मजबूती तक पहुंचाया, आत्मनिर्भर बनाया, उन सबको इसके लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। कई बारी हम अपने नियमों में और बातों में उनको भूल जाते हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी, इसका फाउंडेशन रखा। इस बिल में मोटा मोटी 2-3 चीज़ है, जैसे कि 1962 की जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है और फिर 2010 की जो इस पे लायबिलिटी रिलेटेड जो एक्ट थे उनको ये ऑल्टर करके प्राइवेट प्लेयर्स को और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इस पे अलाउ कर रही है। आज आगे की इस पे डिस्कस करें, ये समझना पड़ेगा कि क्या हमारे देश को न्यूक्लियर एनर्जी के डायरेक्शन में जाना चाहिए या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में हमने इतना एडवांसमेंट किया है, जैसे सोलर ले लीजिए, विंड ले लीजिए, हाइड्रो ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, कई सारे ऐसे एनर्जी के सेगमेंट्स हैं, क्या इन सारे सेगमेंट्स में ज़्यादा अपना फोकस रखना चाहिए या न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हमें जाना चाहिए? और अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी के डायरेक्शन में फर्दर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिसके आधार पर ये डिसीजन होगा? ऑनरेबल चेयरमैन सर, न्यूक्लियर एनर्जी आज की तारीख पे अगर आप देखें तो ये बहुत न सिर्फ एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है, रिस्की है और सबसे महत्वपूर्ण जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो इसका कचरा निकलता है, उसको लाइफ लॉन्ग, लाइफ साइकिल तक उसको सहेज के रखना पड़ेगा, उसके इंश्योर करना पड़ेगा डिस्पोज ऑफ करने की। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने इंस्टीट्यूशंस, रिएक्टर्स लगा लिए और उससे एनर्जी बना ली। तो प्राइवेट कंपनीज को जब हम अलाउ करेंगे तब इन सारी चीज़ों को हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। अभी तक मैं इस बात से मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ, संतुष्टिदायक है और गर्व महसूस होता है कि हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं
उन्होंने इसे जिस भी लेवल तक आज पहुंचाया है, रीजनेबली हमारी जो सेफ्टी के नॉर्म्स इस पे रहे हैं काफ़ी अच्छे रहे। ऑनरेबल चेयर सर, आज इस पड़ाव में कि हमें रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहिए या न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी का परित्याग कर दिया और जो पहले से टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग थे वो धीरे 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 इसे छोड़ने लगे। आप जर्मनी ले लीजिए, जर्मनी ने ये डिसाइड किया है कि वो फेज आउट करेंगे। आप इटली ले लीजिए, इटली ने डिसाइड किया है कि हम फेज आउट करेंगे। आप जापान ले लीजिए, जापान में एक्सीडेंट के बाद धीरे धीरे वो फेज आउट करने को प्लान कर रहे हैं। स्पेन, बेल्जियम, ये सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी वो फेज आउट कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, ये उन कंट्रीज के लीग में हैं जो काफ़ी मात्रा में इनमें अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्राइवेट कंपनीज को भी इस पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बिल लेके आए थे यहाँ पर, जब अमेरिका के साथ समझौता हो रहा था न्यूक्लियर एनर्जी से संबंध में ही, भारतीय जनता पार्टी की जो सामूहिक ग्रुप था उन्होंने इसका विरोध किया था। पूरे देश में बहुत बड़े सेक्शन ने भी इसका विरोध किया गया था और इसका कारण क्या था कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को इसमें रोका जाए, एक्सटर्नल ओवरसाइट बढ़ेगा, मार्केट लिंक्ड न्यूक्लियर फ्रेमवर्क होगा। तो फिर ये आइडियोलॉजिकल डिसीजंस थे, ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं था। मैं आज इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये एक्सेप्ट करते हो कि उस समय जो आपने विरोध किया था वो पॉलिटिकल था, इट वाज नॉट एन आइडियोलॉजिकल। हैड इट बीन आइडियोलॉजिकल, देन टुडे डू यू एक्सेप्ट दैट यू हैव चेंज योर आइडियोलॉजी इन दिस पर्टिकुलर थिंग? ऑनरेबल चेयर सर, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, हम सब उस पर प्राइड लेते हैं। आज हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूशंस इस कैपेबिलिटी में हैं कि आज अगर हम इसको एक्सपैंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी उस मेच्योर्ड कंडीशन में, जिस मॉड्यूलर रिएक्टर की बात ये कर रहे हैं, आज वो हम लगाने की कैपेबिलिटीज हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप प्राइवेट प्लेयर को किस लिए लाना चाह रहे हो? क्या आप इसीलिए लाना चाह रहे हो कि सिर्फ पैसे की जरूरत है उस पे, या फिर आपको लगता है कि वो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और टेक्नोलॉजी से एडवांसमेंट होगा? आज आपके देश के पास एक रिलेटिवली रीजनेबली वेल स्टैब्लिश्ड मैच्योर टेक्नोलॉजी है, क्या हम उसको इंप्रूव और इंक्रीज नहीं कर सकते? ऑनरेबल चेयर सर, हम विदेशों के एक मॉडल को इंपोर्ट कर रहे हैं विदाउट इंपोर्टिंग देयर रेगुलेटरी स्पाइन। हम जब तक रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे तब तक प्राइवेट प्लेयर्स को आप बुला तो लेंगे बट आप चला नहीं पाएंगे, उसमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी। ऑनरेबल चेयर सर, हमारे देश की अगर रेगुलेटरी हिस्ट्री को आप देखें, रेगुलेटरी हिस्ट्री जब हम देखेंगे तो आप यूरेनियम के खदान हैं, जैसे हमारे देश में राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। मोटा मोटे हम झारखंड और आंध्र प्रदेश में माइनिंग करते हैं। यूरेनियम के खान जहाँ पर हैं, जहाँ पर हम माइनिंग करते हैं, आप वहाँ के आसपास के लोगों के जीवन को जाकर देखिए। वहाँ पर एक रिसर्च हुआ था, सर्वे हुआ था, उस सर्वे में 30% लोग हैं जो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो रहे हैं। अबाउट 18 to 20% मिसकैरेजेस हो जा रहे हैं या स्टिल बेबीज पैदा हो रहे हैं। स्किन के कैंसर के तो आप नाम मत लीजिए, मतलब इतना प्रिवेलेंट है ऑनरेबल चेयर सर। वो फोटोग्राफ्स और उनकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो ये इतना आसान नहीं है और सरकार के अंडर में ये माइनिंग हो रही है। सरकार जब माइनिंग कर रही है फिर भी जनता की हालत ये है। आप सोचो कि जब चारों तरफ प्राइवेट प्लेयर आके माइनिंग करेंगे तो इनका पूछ करने वाला कौन होगा? ये हमारा इतिहास है, हमारे रेगुलेटरी जो बॉडीज है, हमारे जो इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन है, ये इसका रिफ्लेक्शन है। ऑनरेबल चेयर सर, आपको याद होगा भोपाल गैस लीक जो हुआ था यूनियन कार्बाइड वाले में, 40 साल हो गए, आज भी उससे हम उबर नहीं पाए हैं। इससे भी हमें समझ लेनी चाहिए हमारे देश में कि आप टेक्नोलॉजी के नाम पे तो कर देंगे बट रेगुलेटरी रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन जब तक नहीं रहेगा किसी न किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। वाटर लेवल में जो यूरेनियम के कंटेमिनेशंस बढ़ रहे हैं, आप पंजाब ले लीजिए, पंजाब में फरीदकोट लीजिए, आप चाहे भटिंडा के बेल्ट पे चले जाइए, फिरोजपुर के बेल्ट पे चले जाइए, दिल्ली ले लीजिए, आप झारखंड ले लीजिए, आप बिहार ले लीजिए, वाटर लेवल में यूरेनियम बढ़ रहा है और इसके डायरेक्ट इंपैक्ट आपके कैंसर के नंबर ऑफ केसेस में दिख रहे हैं। ऑनरेबल चेयर सर, न्यूक्लियर को तो 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, आप थर्मल का ही आप रेगुलेटरी बॉडीज की कैपेबिलिटीज और इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन ले लीजिए। हम कितनी बार वहां पर जाकर
इंस्पेक्शन करते हैं? हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार हमने किसी कोयले के या थर्मल पावर प्लांट को बंद किया हो ये बोल के कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे? क्या आपने कभी जो कोयले की जो थर्मल प्लांट है उसके आसपास रहने वालों से जाकर पूछा है कि क्या आप ये चाहते हैं? जहां भी ये ओपन हुआ है, जहां भी ये खुला है, अस्थमा अस्थमा कैंसर, यही प्रॉब्लम है। हम कोयले की टेक्नोलॉजी जो है उसको तो अभी जो मैच्योर टेक्नोलॉजी है उसमें तो अभी तक हम कोई इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी लेकर नहीं आ पाए हैं, वहां पर हमारी कोई रेगुलेटरी इंटरवेंशंस नहीं हो पाए हैं, तो हम न्यूक्लियर कैसे करेंगे? कैसे न्यूक्लियर करेंगे? तो प्रश्न आज हमारे देश के सामने ये नहीं है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपके रेगुलेटरी बॉडी इतने इंडिपेंडेंट और स्टैट्यूटरी मैच्योर्ड हैं कि उनमें कैपेबिलिटी है, आज वो ले सकते हैं? आप पॉल्यूशन ले लीजिए, वेस्ट मैनेजमेंट ले लीजिए, दिल्ली में कूड़े का एक पहाड़ है, वो हमसे नहीं उठ रहा है। हम नदियों को क्लीन करने की बात कर रहे हैं, नदियां हमसे क्लीन नहीं हो रही है। कहां से अफ्लुएंट्स आ रहे हैं किसी को नहीं पता, कहां अफ्लुएंट, इतने दिन हो गए। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस ऑनरेबल चेयरमैन सर, इट इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल विल, अंडरस्टैंडिंग एंड द रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस, रेगुलेटरी बॉडी की इंडिपेंडेंस। ऑनरेबल चेयर सर, जो नया बिल है 2025 उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सबसे पहले तो फुल्ली स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी हमें होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट लाइसेंसिंग उस पर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स के डिस्क्लोजर होने चाहिए, क्लीन इन्फोर्समेंट एंड शटडाउन पावर्स होने चाहिए, क्लैरिटी ऑन लायबिलिटी एज वेल। We are importing a private model, again I am repeating, without its regulatory spine. Honorable Chair sir, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जहाँ पर भी हुए हैं, चाहे आप चेर्नोबिल ले लीजिए, चाहे फुकुशिमा ले लीजिए या कई जगह पे ले लीजिए, ये इसलिए नहीं हुआ कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो इसलिए हुआ क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, रेगुलेशंस में वहाँ पे फेलियर हुए हैं। तो ये कहना कि टेक्नोलॉजी आएगा, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इंजीनियर सक्षम नहीं, हमारे देश के इंजीनियर सक्षम है, साइंटिस्ट सक्षम है, वो उसको हम फेल करते हैं अपने रेगुलेशन से, अपने रेगुलेटरी जो पावर्स हैं, लॉज से, और वो फेलियर आप इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि हमारे पार्लियामेंट से जो कानून बना रहे हैं, रूल बना रहे हैं, वहां से है। ऑनरेबल चेयर सर, जो रेगुलेटर है अभी जो प्रपोज्ड है इसमें, AERB जो है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो बनाए हैं, वो अच्छी बात है, एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं। यहां पर जो ऑपरेटर है, जो रेगुलेटर है और जो प्रमोटर है, तीनों का तीनों एक ही है। ये कैसा संभव है कि जो पुलिस है वही चोर है? तो आप जिसको पुलिसिंग कराना चाह रहे हो उसको आपको स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी पड़ेगी, सेपरेट और इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी पड़ेगी। अमेरिका में NRC है जो इंडिपेंडेंट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। यूके में ONR है, इंडिपेंडेंट है, स्टैट्यूटरी है। कनाडा में CNSC है, इंडिपेंडेंट है, और दे ऑल report to the parliament. Honorable Chair sir, I would request, urge through you that this also nuclear oversight should also be reporting to the parliament. Sir, thank you sir. Just 2 minutes, 2 important points sir. जो safety के measures हैं हमारे देश में, आप देखेंगे कि जो institutions हैं वो जो safety के documents होते हैं हम कभी public में नहीं लाते। कभी हमने आपने देखा है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में सेफ्टी के डॉक्यूमेंट को पब्लिक लाते हुए? हमारी ये कमी है, आप उसको पब्लिक स्क्रूटिनी में लाइए। इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है नए बिल में। आप US ले लीजिए, कनाडा लीजिए, UK ले लीजिए, जिनका रेफरेंस और उदाहरण हम देते हैं कि देखो वो कंट्री कर रहे हैं, बट वो अपने सारे सेफ्टी के डॉक्यूमेंट पब्लिक स्क्रूटिनी में लाकर रखते हैं। पुराने जो एजेंसीज हैं, पुराने जो रिएक्टर्स हैं, उनको जब आप वापस से रिलैक्सेशन आप देते हैं तो भी पब्लिक स्क्रूटिनी में नहीं आता। स्टेज लाइसेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट सर, और फाइनल आई कंक्लूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सर। जैसे अभी पूरा इंटरेस्ट किस पे है? थोरियम पे। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एबंडेंस में थोरियम है, और अब पूरी माइनिंग जो शिफ्ट होगी थोरियम में। तो क्या इस बिल के माध्यम से, मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि बिल में क्लैरिटी नहीं है, मैंने कई बार इसको पढ़ा, क्या इस बिल के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को थोरियम की खदान को देने की प्लानिंग है? इसलिए ये बिल हम ला रहे हैं। ये गवर्नमेंट को हमें क्लैरिटी देनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला। Thank you, sir. I rise to speak on the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India Bill 2025. एक मिनट, मिस्टर अयोध्या रामी रेड्डी आला, प्लीज 1 मिनट। मैसेज फ्रॉम लोक सभा सेक्रेटरी जनरल।
Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 18th of December 2025, 1. has adopted the following motion that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 130th Amendment Bill 2025, the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025, and the Government of Union Territories Amendment Bill 2025 up to the first day of last week of the budget session 2026. 2. Pass the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin VBG Ramji Bill 2025. I lay a copy of the said bill on the table. Manya Judhya Rami Reddyala, your time starts now, please. Yeah. So, sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025. Sir, for decades, nuclear power in India remained largely restricted to government bodies. This bill recognized the aspirations of 21st century of India, especially energy security and low carbon growth, requires bringing in private investment and regulatory clarity. At the same time, it rightly retains central government control over strategic and sensitive activities, ensuring national security and technical integrity. This bill recognizes that nuclear energy is not limited to just electricity alone, but also towards regulation of radiation facilities used in medicine, diagnostics, cancer therapy, agriculture, and industrial applications, which will help standardize safety while enabling innovation and wider public benefit. However, sir, while we support the broad vision of clean energy, we cannot discuss any national policy without considering the real governance challenges that we will be facing. However, there are some key features of this bill which they're allowing private companies and government entities and joint ventures to build, operate, and decommission nuclear plants. Here I have some concern on the private companies coming into it. It also keeps sensitive activities such as fuel processing, high-level waste management, and enrichment safety under central government control. Very good. It introduces a dual authorization system, a license from center, and a safety authorization from AERB. Very good. It also gives the AERB statutory powers to inspect, enforce safety complaints, and coordinate with international nuclear regulators. Very, very good. Regulators, it also regulates radioactive substances and radiation facilities used across the healthcare, research, and industry. Good. It updates the nuclear liability regime, capping operator liability and having the central government and assuming the residual liability. But sir, capping the liability on a private operator, I am not for it. It sets up a nuclear damage claims commission to handle compensation without civil court intervention. Very good. However, sir, there are some challenges. The nuclear projects can succeed only when people have confidence in the system. However, this bill does not clearly mandate community consultation, transparent information sharing, and continuous engagement with people living around the nuclear facilities. Sir, there are also some ground-level emergency response gaps we saw in this bill. In any nuclear incident, the first responders will be the district officials, hospitals, and local communities, not the authorities sitting in Delhi. Yet the bill does not mandate emergency drills, radiation-specific medical preparedness, or public awareness programs. Given the present state government's poor track record in routine disaster management responses, these gaps become even more alarming. The nuclear waste remains hazardous for decades and even centuries, but the bill does not clearly fix long-term responsibility after the plant decommissionings. If private operators exit and state institutions remain weak, future governments and the citizens of this country may be forced to manage unresolved environmental risks, an issue of intergenerational injustice. We certainly need to take into account of the environmental concerns that are going to come out of the nuclear waste management.
Sir, coming to the benefits that we have to give to the host states which are permitting these sort of facilities. Sir, while the bill centralizes the key powers, it does not sufficiently strengthen preparedness or negotiating capacity at the state and district levels. If private entities are allowed to operate nuclear power plants, host states must be assured of clear and tangible benefits. The bill is largely silent on guaranteed local employment and priority power allocation or structured community development. Further, the bill creates a nuclear damage claims mechanism. It does not clearly explain how affected communities will be informed, represented, or assisted in accessing compensations. Without clear benefit sharing mechanisms and transparent participation, nuclear expansion risks becomes extractive rather than inclusive. Sir, introducing private nuclear operators without strong center-state coordination is very dangerous. I would want that the Honorable Minister to take note of this. Sir, therefore, on behalf of my party, I respectfully suggest that Government of India, for atomic energy, we must have our clear strategy for next 25-50 years. We should also have the right kind of structuring. How these projects are going to happen. Even if at all it has to happen, you can bring in the public-private participation where government must be partner with the private investors. Then we should also clearly mention the deliverables. The deliverables around this, on every front. See, whether it's not just power generation, but also beyond that, how we are going to take advantage of this particular activity to take our country to the next level. And also a right kind of review mechanisms and the right kind of audit mechanisms, especially AERB we are bringing in, but it needs to be strengthened a lot. We need to really get into that. And with that, also the union government should make mandated state-level consultation frameworks before citing the nuclear projects with legally binding stakeholder engagement protocols. Also, disaster management and public health readiness plans integrated with the local governments, especially for states with coastal populations and industrial growth aspirations, must be brought in. A transparent benefit sharing model should be built into the licensing regime so that host regions gain tangible social and economic advantages from these nuclear investments. Sir, once again, I want to say that strengthening, because this is atomic energy, as some of our other members have mentioned, it's a very, very sensitive subject. We, from the government side, if you look at on the environment side, whether it is air pollution or water pollution, solid waste management, even atomic waste management. If you see, we have to do a lot of work. So I would strongly recommend that on these particularly waste management areas, environment protection areas around atomic energy plants, we must really put ourselves furthermore thinking and thought process and strengthen the AERB to next level. With these recommendations from YSR Congress Party, we support this bill. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री मुजिबुल्लाह खान. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आज मेरे नेता नवीन पटनायक तथा बीजू जनता दल की तरफ से मैं इस शांति बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं. मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि बहुत से वक्ताओं ने अपना बात रखा यहाँ पर. जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त ये एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट जो शुरू हुआ 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इसका शुरुआत हुआ. ये एटॉमिक एनर्जी शांति के लिए हमारा देश बनाना चाहता था और बनाना चाहता भी है भविष्य के लिए. 1974 में मई 18 तारीख को जब पहले
टेस्टिंग हुआ हमारे देश में, उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जब पहला टेस्टिंग हुआ, सारा दुनिया में तहलका मच गया कि भारत ऑटोनॉमिक टेस्ट कर चुका है, लेकिन हम शांति के लिए करना चाहते थे। उसके बाद मई 11 और 13 को 1998 को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब ये टेस्टिंग फिर से हुआ हमारे देश में। और उस वक्त उसको लीड कर रहे थे, मेन कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर आर चिदम्बरम, डॉक्टर अनिल कोकदर, ये भी उनके साथ थे, वो कोऑपरेट किए थे, तब जाके ये टेस्ट हो चुका था। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं, उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। जब वो मिसाइल टेस्टिंग के लिए उड़ीसा में एक रेंज प्रतिष्ठा करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू बाबू से मिले 90s में, और उन्होंने चाहा कि उनको आइलैंड जरूरत है जहां पर वो टेस्टिंग करेंगे। तो बीजू बाबू तब उन्हें कहा था कि अगर यहां से आप चाइना तक अगर पेनिट्रेट कर सकते हो, मार सकते हो, तो मैं आपको जगह दूंगा, मिसाइल ऐसा मिसाइल बनाओ। तो अब्दुल कलाम जी ने उनको वादा किया था कि मैं जरूर ये काम करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल आ रहा है, ये प्राइवेट कंपनियों को फायदा देगा, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी एंटर करेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स अगर एंटर करेंगे, तो सुरक्षा के बारे में बहुत हमको सचेतन होना पड़ेगा। मैं सरकार से मांग करूंगा कि सुरक्षा कैसा किया जाएगा, सुरक्षा को खास करके मुआवजा कैसा दिया जाएगा। अगर कोई घटना घट गया, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसका कैसा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये है सबसे बड़ा बात, क्योंकि परमाणु ऊर्जा बहुत खतरनाक होता है, खास करके पर्यावरण, लोगों का जान भी प्रभावित हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, ये बिजली बनाने का एक माध्यम भी है हमारा। जब दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। अध्यक्ष महोदय, क्या कि आप जानते हैं, जब भारतवर्ष में दुर्घटना हुआ था 1984 में 3 दिसंबर को, यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ था, 16,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। अध्यक्ष महोदय, और बहुत से लोग अपंग हो गए थे, कई सालों तक बच्चे भी अपंग पैदा हुए। उसका मतलब ये बहुत खतरनाक भी है, जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। तो सुरक्षा दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमको इसको बहुत ध्यान से इस बिल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और खास करके उन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर अगर कुछ घटना घट गया, अगर कुछ दुर्घटना घट गया, तो लोगों को मुआवजा कैसा मिलेगा उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि यूनियन कार्बाइड के वक्त जब दुर्घटना घटा तो बहुत से लोग आज तक कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, उनको आज तक भी मुआवजा नहीं मिला है। कई साल हो गया, 84 मतलब कई साल, 35-40 साल हो गया वो मुआवजा के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उन लोग को अभी तक मिला नहीं। इसमें कुछ नियम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दुनिया भर में ऐसा बहुत से जगह दुर्घटना हुआ है, जैसा चेरनोबिल में 1986 में दुर्घटना हुआ, फुकुशिमा में 2011 में दुर्घटना हुआ। तो परमाणु कचरे को खास करके साफ करना भी एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वो परमाणु कचरा अगर रह जाएगा तो भी वो बहुत खतरनाक साबित होगा। जैसा कि कहते हैं, छोटा सा बैटरी को भी कहते हैं कि बैटरी को जमीन में गाड़ दो, जमीन में गाड़ने के बाद भी उस बैटरी के अंदर जो रहता है वो भी खतरनाक होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अध्यक्ष महोदय, परमाणु कचरा को कैसा साफ किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे जैसा उड़ीसा से आता हूं, मेरे उड़ीसा में
उड़ीसा राज्य में मछुआरे हैं, किसान हैं, बहुत जंगल है। ऐसा विभिन्न राज्य में भी मछुआरे हैं, किसान है, बहुत जंगल है। उस जंगल में बहुत से जानवर भी है। अगर इस तरीके का अगर कहीं अगर दुर्घटना, भगवान करे दुर्घटना ना हो, अगर हो गया तो उसका मुआवजा कौन देगा? इसमें एक क्लोज ऐसा भी रखना चाहिए कि जो प्राइवेट कंपनियां इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसका मुआवजा उन लोग देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि जल्दबाजी में ये बिल पास करा जाएगा तो भविष्य में बहुत प्रॉब्लम होगा। 2047 तक 100 गीगावाट बिजली चाहिए, ये गवर्नमेंट का टारगेट है। हम इसको मना नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि विकास हो। हम लोग विकास के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये बिल आने के पहले मैं सोचता हूं कि ध्यान से इसको देखा जाए, हो सके तो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को भी दिया जाए ताकि इसको पूरा तरीके से, अच्छी तरीके से जांच हो। उसमें बिल में अगर कोई जरूरत हो तो उसको फुलफिल किया जाए। अगर जल्दी जल्दी में हम पास कर देंगे तो लोगों का जान और माल का तो खतरा है, जानवरों का भी जान और माल का खतरा, उनका भी जिंदगी दांव पे लग जाता है। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, माननीय मंत्री से, यहाँ पर बैठे हैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इसको ध्यान से सोचिए, ध्यान से चिंता कीजिए और इस बिल को कैसा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाए और डिस्कशन हो, और जो भी वहाँ पर खामियां अगर होगी तो इस खामियां को कैसा पूरा किया जाए, ये आप लोगों का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि इतना इस बिल को फिर से देखा जाए और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का कोशिश किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया उपसभापति महोदय। इस चर्चा में मैं अपनी कुछ आपत्तियां अपने दल की ओर से दर्ज कराना चाहता हूं। आपत्तियां हैं, आलोचना है और उसके पीछे मकसद है कि संसद की इमारत इसीलिए बनी है। महोदय, हाल में मैंने एक किताब पढ़ी गोपाल कृष्ण गांधी जी की, द अनडाइंग लाइट। पता नहीं मंत्री जी ने वो किताब पढ़ी या नहीं, मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के बड़ा लंबा हमारा एक इतिहास रहा है। राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू और बाकी अन्य के बीच में कई खत, कई तरह के पोजीशंस शेयर किए गए। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इतिहास में आजकल वैसे भी दौर चला हुआ है काउंटर फैक्चुअल इमेजिनेशन का, तो एक सही के इतिहास से कुछ सबक ले। सर, माननीय सभापति महोदय, न जाने क्यों इस बिल को देख करके मुझको लगता है कोई अदृश्य शक्ति है जो शांति, ओम शांति करवा रही है। कोई अदृश्य शक्ति है। उस अदृश्य शक्ति का नाम 1 है, 2 है, 3 है या समृद्धि के 5 टापू इस शांति के पीछे हैं। यह मैं इतिहास के आकलन के लिए, सदन के आकलन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के आकलन के लिए छोड़ता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा माननीय उपसभापति महोदय आपके समक्ष कि हमारा पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐतिहासिक रूप से कुछ सिद्धांतों पर आधारित था। उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि जहां रिस्क कैटास्ट्रोफिक होने की संभावना है वहां राज्य अनुपस्थित ना हो। मैं राज्य की अनुपस्थिति का दस्तावेज देख रहा हूं एक अदृश्य शक्तियों के प्रभाव में। मैं माननीय उपसभापति महोदय, दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। मैं छोटा उदाहरण दूं, चाइना का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल न्यूक्लियर आउटपुट में 16% है, फ्रांस का 14% है, रसिया का 8% है। मैं 3 ले रहा हूं और इन तीनों में स्टेट ओनरशिप की प्रबलता, प्रमुखता है। उसी के इर्द गिर्द ये पूरा प्रोग्राम है। हां, इसमें एकमात्र अपवाद है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां 80% निजी हाथों में है। अमेरिकन मॉडल कैन नॉट बी
considered as the best practice model for my country, keeping in view the inconsistent position of a country called United States of America. अगर कोई अपमान होता है तो वो पक्ष का नहीं, हमारा भी होता है, इस देश का अपमान होता है, तो हमें वो चीजें रखनी चाहिए थी। क्या हमने इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस सोचा? जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है? मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। हमारी जो जानकारी है मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, बीते कई वर्षों में फ्रांस और रशिया के साथ हमारी बातचीत चल रही थी स्टेट ओनरशिप के मॉडल को और प्रबल बनाने की और प्रखर बनाने की और ताकत देने की चल रही थी बातचीत। इसके दस्तावेज है, उस पर यह विराम लगा देता है, ना जाने कैसे। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहूं तो मैंने ऐसे बिल देखे हैं जिनमें लाभ का तो निजीकरण कर रहे हैं, जोखिम का सार्वजनिकरण। क्या यह उचित है भारत की जनता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए? मैं कई बार इस सदन में कह चुका, उपसभापति महोदय, कोई सरकार अमृत पी के नहीं आती है, हर सरकार का एक आखिरी दिन होता है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर हम कर जाएंगे, इसके लिए डिलीट बटन आसानी से नहीं दबता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी में, ह्यूमन हिस्ट्री में डिलीट बटन का प्रावधान नहीं है। मैं एक चीज और कहूंगा माननीय उपसभापति महोदय, ट्रांसपेरेंसी के पूरे क्लॉज से पता नहीं क्या दिक्कत है। हम आरटीआई को खत्म होता देख रहे हैं, आरटीई को खत्म होता देख रहे हैं, और तो और छोड़िए, राम का नाम लगा करके राइट टू वर्क आर्टिकल 41 के तहत उसको भी खत्म होता देख रहे हैं। अब इसमें कहते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन, सेफ्टी वायलेशन और रेडिएशन लीक्स को लेकर के। सर एक चीज तो मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूं इस सरकार के बिलों में, और कभी कभी मैं सोचूं कि इस पर अगर कोई कंटेंट एनालिसिस हो, मोस्ट ऑफ द बिल्स आर अटैकिंग द आर्किटेक्चर ऑफ फेडरलिज्म। आर्किटेक्चर ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। देखिए सर, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आती है ना, तो टेम्पटेशन बहुत खतरनाक आते हैं। उन टेम्पटेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। जो कहते हैं ना कंट्रोल कंट्रोल, वो नहीं कर पा रहे हैं। नतीजे में क्या हो रहा है? मोस्ट ऑफ द बिल्स सरपास दैट, इट्स अटैक। अब मैं कहूं रिस्क लोकल है, लेकिन निर्णय कहां होगा? दिल्ली दरबार में। क्या ये विसंगति नहीं है? मैं तो तमाम दलों से अपील करूंगा जो अलग अलग छोटे छोटे दल हैं। सर बस 30 सेकंड नहीं 30 सेकंड। सर आप तो इतिहास के छात्र रहे हैं। 1600 ईस्वी में एक कंपनी को एक चार्टर मिला था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य में तब्दील हो गई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरा प्राइवेट और निजी से विरोध नहीं है, लेकिन सर देश की सार्वभौमिक सत्ता, सार्वभौमिक आग्रह, सार्वभौमिक नियति, सार्वभौमिक मानदंड समृद्धि के 5 टापुओं के आगे जाकर के आत्मसमर्पण न कर दे, इसका बचाव इस संसद को करना है। एक नहीं, दो नहीं, सब मिलके करेंगे। अन्यथा माननीय उपसभापति महोदय, हम जिस बिल को शांति के नाम से पास कर रहे हैं, कहीं राज्य और राज्य की व्यवस्थाओं के लिए वो ओम शांति का क्षण ना हो जाए। जय हिंद सर। डॉक्टर एम थम्बी दुरई। Honorable Deputy Chairman, sir, I raised today to participate in the discussion on the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India Bill 2025 on behalf of ADMK party under the leadership of respected General Secretary Edapadi Palaniswamy, sir. ADMK has always stood firmly in support of scientific progress, clean energy initiatives, and national self-reliance. Sir, I would also like to place on record our deep appreciation for India's nuclear scientists, engineers, and researchers whose tireless efforts, often under international constraints, have strengthened India's position as a responsible nuclear power. ADMK salutes their
dedication and service to the nation. Sir, states like Tamil Nadu, which has host important nuclear installations such as Kalpakkam and Kudankulam. The center's continued engagement with host states has helped address public concerns and strengthen confidence in the nuclear energy. In the Kudankulam, the people are opposed in Tamil Nadu. There are still agitations going on. The concern is there. And central government must take care of that, their interest, which ADMK is always insisting. We are supporting the Kudankulam people, which they raised. The central must give the incentive. Sir, ADMK particularly welcomes the government focus on cooperative federalism. While nuclear energy is a highly specialized sector requiring strong central coordination, the union government has consistently worked with the state governments on issues of safety, energy, emergency preparedness, and local development. Sir, in this, I want to respond to one matter. Recently, our ADMK member, when he spoke, DMK member spoke, Wilson spoke about the privatization of the nuclear energy, he said. Sir, I am also appreciating his concern, the state's nation's security. I want to bring to the notice of the House, what about the spectrum? Spectrum is also a very important thing for the thing. It's a critical thing. I am telling, sir, what is spectrum on the bill. No, only this is on the record. When that, sir, during UPA government, the spectrum action by the DMK government. That will go on but the record. They are telling now the nuclear energy is the critical thing. I am telling spectrum is also a critical thing for the nation. Security is involved in that. Please, how can they stand? What kind of? No, I'm telling that what? Please speak on the bill. I am coming to the point. No, nation security of the nuclear energy. That point I'm telling. Same case spectrum also nuclear important. No, I'm saying spectrum. National security involved during the auction. What happened? Not go on the record. Please. 2G spectrum scandal is a very famous No, scandal. it will not go on the record. We are not discussing that. What happened? Whatever happened, you know we that. are not discussing that. Why? When they are criticizing the government, nuclear energy, I appreciate that. How can the government, UPA don't given them spectrum to the private sector? That is the point I'm telling. Not go on the record. This is the way the quantitative double standard they are making, sir. I am telling, sir, I am telling this is the point very, very important. I am telling the point, why I am telling about the state security, nation security is very important, which DMK concern. No, you speak I am on the telling that concern I am raising to that also. When they are opposing this, when they are opposing this bill, when they are opposing this bill, only that will go on the record. I'm telling the point, sir, when they are opposing this bill, I have national security. What about the spectrum is another important factor, which how they give an auction and into the jail. The people in the minister went to the jail also. That is a scandal part of the case is still pending in the High Court. On the bill, that will not go on the record. Cases not here. I don't want to prolong the case. On the nuclear energy only, that will go on the record. I am only telling DMK double standard. It will not go on the record. They are doing this kind of thing. The people of the North will come out very well. This kind of scandals have happened. That has to be stopped. That is a scandal. That is a scandal. Everybody is there. That is why I am telling, sir, nuclear energy, safety is very important. Safety is important. Government has already specified what are the measures in the bill, how to give the safeguard to the people. Baiti, I have already told. Please take your seat. The bill has given what are the safeguards has to be given, appreciating that point which is said. The same time, whenever discussing opposition parties must not play the double game. Speak on the bill. Double game must not say. Speak on the bill. Saying, same Congress and the DMK did all this. No, that will not go on the record. Why no, that will not go on the record. Sir, I am telling this is the bill. I am speaking on the bill. Nation security is the most important. No, this I am is not speaking right. that.
The scandal is that I am requesting the Honorable Prime Minister, take action and take what happened previously. The second scandal must be taken action. This is not good. Punish them. This The is not people what of you are- Tamil how you Nadu are supposed coming to election speak on the going bill. to we have Please, fit and supply for this DMK government. Srimati Sudha Murthy. I have already spoken. Trichuji, I have already. Thank you, sir. Whatever he has spoken on the me an bill, only that will go on the record. No, please. talk. Sudha Murthy, Thank- please. Thank you, sir. 1 minute, yes. Yes, sir. Yes. Sir, when you say it won't go on record, it won't be in the records. But the video is going. That will be on YouTube. Sir, So the mic should be switched off, sir. No. And everyone is Manya enjoying says, whatever you is take speaking. it. This is Manya not the says, forum for please, that. please go. We won't come to Tamil Nadu. Come and tell us in Tamil Nadu. Tiruchiji, Come and tell nothing us is in going Tamil on Nadu. record. Please take your seat. Please take your seat. Tiruchiji, you are not ready to listen to chair. Please, 1 minute. You, please. Yes, Tiruchiji has raised a very significant point. Please take your seat. Please, nothing is going on record. No, please take your seat. No, I'm not allowing. It is not going on the record. No, it is not going on record. Honorable members, it is not going on record, Mr. Thambidurai. Please, do not force me to warn you. You are a very senior member. Please, no, I'm not allowing. माननीय सदस्यगण, तिरुचि शिवाजी ने प्लीज माननीय सदस्यगण, तिरुचि शिवाजी ने एक बहुत ही रेलिवेंट पॉइंट उठाया है. ये हाउस की सारे पक्षों से समस्या है. आपको चेयर बार-बार रूल्स ऑफ प्रोसीजर से चलने का आग्रह करता है और सभी पक्षों से मैं देखता हूं यू क्रॉस द बॉर्डर लाइन, देन यू रेज द क्वेश्चन विच वेरी वैलिडली हैज रेज्ड. इधर से भी होता है, उधर से भी होता है, इधर से भी होता है. मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप सब रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करें. सुधा मूर्ति जी, प्लीज स्पीक. Thank you, sir, giving me an opportunity to talk on this bill. Let me remember India's Bhishma Pitamaha, Homi Babaji, and then continue this one. Sir, for Vikshit Bharat 2047, we require energy independence. Without energy, nothing is possible. Sun is another source of energy. I call nuclear energy the another source of, a great source of energy. That's the reason the folk story says when Neil Bohr first time saw the nuclear energy, he said, Aham Brahmasmi. It is the story, or it may not be true, but this is what I've heard. So there are many ways to get energy. One is hydel, second one is coal, third one is wind, fourth one is nuclear energy. Sir, in solar energy, you do generate a lot of energy, but you cannot store as of today for a long time. And after 2-3 decades of time, when it goes, it's not working. It's very difficult to discard that. That is the main problem in that. In case of hydel energy, olden days it was easy. Today with the new geopolitics, building a dam is not that easy. And with the climate change, getting the water and using that water is not that easy, and it is not for a large energy. Coming to coal, yes, coal energy, you can use it, but it gives you a lot of coal emission, which is not good for the environment, so it is not really recommended, but if there is no other go, we have to use it. Next comes wind energy. Wind energy has a limitation. It is intermittent. All the time you don't get good wind. Second thing, transmission is a problem. When looking at all these points, as of today, given set of circumstances, nuclear energy, power generation through nuclear generation, energy through nuclear power, it is more acceptable. I don't say it's the best, but it is more acceptable in today's scenario. Sir, I just want to refer one point which my honorable colleague made, that East India Company came and it all happened. Sir, even the same history I want to refer and tell him. East India Company did come in 1630 by that time, and they established a small shop in Surat. But India was not what India is today. Today's India is entirely different. We are all one today. Even though we fight in all these things,
On a lighter side, we are all Indians, irrespective of the state. It is not easy to open a shop again in Surat or any trade, and they can occupy India. It is not possible. Sir, privatization is not, everybody is saying privatization is bad. No, sir, privatization is not a bad word. Because of privatization, we are creating wealth. Because you are creating wealth, there is reduction in the poverty. There are a lot more opportunities in privatization. The quality of the material in privatization is always good. So, I am all for the privatization. Sir, we are all grew up, at least my generation has grown up. The moment you think of Japan, World War II, think of Hiroshima, Nagasaki, there was a big bomb, and then we always think the effect of that, many generations, etc. But we never think the use of nuclear energy in other way. That means it can be used in medicine, in agriculture, in many, many other fields. It is like, in a way, the kalparuksha, I say, in a modern medicine, and all those things we are using. So it brings hope. It brings, nuclear energy brings hope. It brings peace. And that is an apt name, sir, you have given as the Shanti Bill, because it is the source of peace and hope for a better future. Sir, India has a vast uranium reserve, and it's sustainable in the long-term solution, and it will take a little more time to do that. Sir, people say we should have public sector to do this one. Jairamji is not here. Sir, public sector, you require a lot of money. How to finance that? That's the reason privatization is needed. And it is not that you have to give everything to them. There's a controlled privatization is there. It is partially private, and main control is still with the government. So we should not worry, oh, it becomes individual one, and we can't do anything. No, don't do that. Let us start always with a positive mind, with hope, and we will do this one. Sir, if we want to go to Prime Minister Dream, Viksit Bharat 2047, then we require power at that time. Today, the installed power generation through nuclear energy is only 8.8 gigawatt. But we have to achieve 100 gigawatt. And to get 100 gigawatt, it won't happen in one day. 1 year, 1 decade, it's not possible. It is 2025, and the 23 years are left. And we have to start somewhere, sometime, the first step. And if we start building now, over 23 years of time, it requires time. It requires technology. It requires a lot of planning. It requires so many other sources of energy. So we have to start new privatization this bill so that we'll be able to get 100 gigawatt of energy at 2047. There's nothing wrong that, of course, we have to consider our Swadeshi, everything is right. But there is nothing wrong in looking around for the best practices around the world. Rigveda says, Ano Bhadrani, the very famous saying, it says, let all noble thoughts come from all sides of the world, and we will accept the best in that, and according to our situation, we should modify and use it. There's nothing wrong. So there are many countries like UK, may not be much in there, but France, Japan, Korea, and America. Of course, Germany has a different strategy, that is their own country's strategy, we will not take into that. There are 5 countries, for example, I am taking, and every country has some best practices. Like France has, it is using the waste as a resource again, and Korea has a standard modularization. America is completely privatized with 80%. So for our country, what is the best? As of today, we should use. And in the process, I want to give a small suggestions that we should also use the waste as resource like France, and we should also make a model in such a way that it should be standardized so that it becomes easy to operate. Third one, sir, we can have a robust regulatory system with the Atomic Energy Regulated Board where safety is above the profit. Sir, I would really like to recommend this. I would like to recommend this bill because it helps to grow, it helps to innovate, and it makes us dependable. The small module reactors save time, space, and it can be closer to the work area, unlike before. Sir, there is a very famous saying, how we should implement this? We can implement this with the affection of a mother,
and the discipline of a scientist, so that we are benefited and we should go ahead. Thank you very much, sir, giving me generous time. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you. Honorable K.R. Suresh Reddy ji. Deputy Chairman, sir, this is an important piece of legislation for a rapidly developing nation like ours with increasing electricity needs. As the bill relates to nuclear power, on behalf of my party and myself, I take this opportunity to appreciate the efforts of all our scientists, nuclear scientists and their staff who have got us to this stage where India can be proudly claimed as one of the strong nuclear nations. Sir, the bill has a lot of pros and cons, and with my limitation of time, I would like to understand from the Honorable Minister. When the bill came up, it was primarily meant that this bill will add a lot of electricity to our growing needs. And this has raised a lot of hope, especially in the rural areas. As you are aware, sir, India is agriculture-based country. But when we look at the need of electricity and the wastage of natural resources, it has been said that almost 35% of the river water, rainwater goes waste into the sea, for the reason being that it is not able to be tapped because of the terrain where they need a lot of electricity to pump water. If this bill and in the due course can it achieve the goal of ensuring these far-flung areas who are deprived of electricity but who have natural resources, and if they get access to the power which is envisaged in this bill, then definitely India would be reaching greater heights and also getting our food security assured, sir. The second part, when we look at the bill, sir, then we look at Viksit Bharat, where is the theme for the government, and as part of that, industrialization is one of the main keys, sir. Now, for industrialization also, power is a key requirement, and we have noticed a lot of small enterprise suffering. Small enterprise, not in major cities, but in smaller towns, India has gained a lot of enterprise. But if we can create the facility, infrastructure in smaller taluka level, district levels, a lot of enterprise can come, and this definitely can reach the goal of Viksit Bharat as you are planning. And then, of course, the changing times, the bringing in of technology. I'm talking of the pros of the bill, sir, before I come to the cons of it. The pros say that, India is rapidly developing data centers, artificial intelligence. These are all very good coming up, and India is becoming a center for these. And obviously, these centers require huge quantum of power, which, assuming this bill would be one of the sources to create that requirement. And then, of course, our climate commitments for low carbon also is fulfilled through this bill, sir. But then there are concerns. There are concerns about safety. The glaring deficiency of this bill, sir, is the complete omission of the environmental liability. It contradicts India's international commitments, which we have made at the Paris Agreement and then also the Principle 10 of the Rio Declaration. It also undermines Article 21 of our Constitution, the right to clean and healthy environment. That is in question if the bill is introduced in the form where it is being debated, sir. Significant portion of nuclear mining also is happening in tribal areas. Vice Chairman, sir, you are aware that tribal areas, especially Jharkhand, and the kind of contamination, the cases of cancer which came up through water contamination and other reasons, has been an area of concern. They did try to bring in Nalgonda also, that was stopped. So fundamentally, I would request the bill be passed to the select committee. And if it doesn't go to the select committee, sir, I have a suggestion. Then the responsibility lies on this House, it lies on the chair. Then the Committee on Environment, Science and Technology should continuously monitor the bill and its implementation. Thank you, sir. Thank you, Mr. Suresh Reddy Garu. Honorable Member A. Rahim. Thank you, sir. Thank you for this opportunity.
Sir, let me start my speech with a mantra. Loga samasta sukhno bhavantu. In the light of these lines, this mantra, myself and my party strongly oppose this bill. Sir, this bill is against the humanity. So for my country, for the future generation, for the entire earth, for the humanity, we are opposing this bill. Sir, why we are opposing this bill? Sir, this bill is clearly protecting the interest of private players, especially the interest of suppliers. The second one is that the major thing, the prime thing is that liability gap. The liability gap is not sufficient. It must enhance. This is my party's demand. Sir, respected sir. Sir, Section 4, Clause 1, Clause B of the Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010, which was passed by the second UPA government, clearly states that the operators are liable for nuclear damage arising from nuclear material coming from or originating in that nuclear installation. The most dangerous aspect of this bill is that it selectively omits the liability of suppliers. This is the highly objectionable, sir. Sir, Section 13, Clause 1 states that the maximum amount of the liability in respect of each nuclear incident shall be the rupee equivalent of those 300 million special drawing rights or such higher amount as the central government may by notification specify. This is exactly the same approach adopted in the second UPA legislation. Sir, now I am going to a further section, another section, Section 14, Clause 1, Clause A states that the central government shall be liable for the amount by which the liability exceeds the amount specified for an operator in the second schedule. Sir, in effect, public money is being used to shield private operators. Sir, I would like to recollect a memorable speech in the very same house, Rajya Sabha. Then they are in the opposing side, the opposition side. Arun Jaitley was the opposition leader of this house. Quote, today, this is the words of Arun Jaitley, quote, today you are in power, tomorrow somebody else can be in power. Why must the government of India take the liabilities of mistake created by some third party? Unquote. This quotation, this words by your leader Arun Jaitley in the very same house. So I would like to ask the treasury bench, are you still with that position? Are you still with that position? Sir, I would like to recollect another legendary leader, none other than my leader, a legendary parliamentarian and the leader of oppressed, Comrade Sitaram Yechuri. He spoke in the same house, in the same day. Quote, even after 26 years of the Bhopal accident, the entire elected political class of the country has let down the victims of Bhopal. Let down is because we did not have adequate liability laws. We, the left, sir, please, sir, I'm going to conclude. We, the left, have been raising this issue in the House and in the other House even since 1984. It was those who were in the government from one side or the other who let down the people due to the absence of strong liability laws. In the same House, thank you, Mr. Sir, in the same House, my party, Communist Party of India, marched repeatedly asking for the strong liability laws. Strong liability laws. So, just I'm going to conclude. Sir, only one thing I would like to conclude, that the clause 81 of the bill states that no civil court shall have jurisdiction. So, what is the sir?
what is happening in our country. So once again, let me conclude. I would like to repeat. Loga samasta sukhno bhavantu. Don't undermine the peace of the world. Don't undermine undermine the future of our next generation. So I strongly oppose the bill and kindly send back the bill to the select committee. That is my opinion. Thank you very much. Now, Honourable Member Professor Ram Gopal Yadav. Professor Ram Gopal Yadav. का नाम आया कहाँ बोले कहाँ नाम तो लिया नहीं ना धन्यवाद श्रीमान। बहुत कम समय है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में ही बात करना चाहूँगा। नंबर एक, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। और विरोध क्यों करता हूँ? जो 2010 का एक्ट था लायबिलिटी का, जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं कि न्यूक्लियर डील के बाद ये बिल लाया गया था और एक स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था। इतना महत्वपूर्ण बिल था ये और आज भी है कि इसको भी स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए था। मैं उस बिल की स्टैंडिंग कमेटी में था। न्यूक्लियर डील पर जब चर्चा हुई थी वो सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही सेंसिटिव एक इस तरह का दिन था देश में। ये लग रहा था कि आज शाम को सरकार मनमोहन सिंह की बचेगी या नहीं बचेगी। उस वक्त भी मैंने कहा था उसमें कि ये हमें हर वक्त जो यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो शांतिमय प्रयोगों के लिए, और ये तो कह नहीं सकते थे कि वेपनाइज करने के लिए भी है, लेकिन ज़रूरत तो है ही, असली ज़रूरत थी वो। तो उसके लिए था कि हमारे यहाँ इतना बड़ा भंडार है थोरियम का कि अगर हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाएं न्यूक्लियर यूरेनियम 233 और उसके सहयोग से, तो आगे चल के हमें कोई दिक्कत दूसरों से यूरेनियम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एनरिच्ड यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जो है, जो एटम बम बनाने के लिए और वेपनाइज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसका जो बाहर से ला रहे हैं उससे काम चलता रहेगा। लेकिन उस दिशा में हम बढ़े नहीं आगे। और ये कहना कि न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से हम सारी उसकी पूर्ति कर लेंगे, अभी हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी कितनी है? 2-3% से ज़्यादा नहीं। हम कितना ही कोशिश करें तब भी बहुत जल्दी एक बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर एनर्जी का हमारे पास जो अभी हम है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं आ सकता। लेकिन इसके खतरे भी बहुत हैं। संदीप जी ने बताया था, मैंने तो स्वयं देखा कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में नरौरा में न्यूक्लियर रिएक्टर है, पावर रिएक्टर, वहाँ से जो रेजिड्यू जाता है, जो ट्रकों में जाता है, पुलिस के संरक्षण में जाता है और 20 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार से वो ट्रक नहीं चल सकते। इतना खतरनाक होता है कि लोग डरते हैं जब वो रेजिड्यू वहाँ से जाता है कि कहीं कोई बात न हो जाए। तो इसमें आप जो हटा रहे हैं लायबिलिटी का, सप्लायर के ऊपर लायबिलिटी का अगर नहीं होगा तो उसका कोई लाभ ही नहीं। इसके माने आप प्राइवेटाइज ऐसा करने जा रहे हैं कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए देश की जनता के ऊपर अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई बात हो, कहीं किसी तरह का जैसे चेरनोबिल में हुआ था या जापान में हुआ था, ऐसा हो जाए तो सब पब्लिक के ऊपर आ जाएगा। जितना नुकसान होगा टैक्स पेयर जो है उसको सब पे करना पड़ेगा। तो आज तक ये लोगों की, आम लोगों की समझ में आता है। सड़क पर चलने वाला आदमी भी कह रहा है कि लगता है हमारे यहाँ का जो भंडार है थोरियम वगैरह का वो किसी को देने के लिए साजिश की जा रही है और घुमा फिरा के ये व्यवस्था की जा रही है कि जो सप्लाई करेगा, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर करे या उससे संबंधित और कोई चीज़ करे, उसकी गलती होने पर भी खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा, उसको कोई कंपेंसेशन ज़्यादा देना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरी सरकार में बैठे हुए लोगों से ये प्रार्थना है कि इस पर एक बार विचार करें और
सिलेक्ट कमेटी को इस बिल को भेजें, क्योंकि ये जनता के हितों के खिलाफ बिल है, जो कुछ लोगों के इंटरेस्ट के लिए लाया जा रहा है। ये आम लोगों में इस तरह की चर्चा है और वो वास्तविकता भी है। जब जब लोगों ने संदेह व्यक्त किया कि गवर्नमेंट इसलिए करने जा रही है, हुआ भाई ये भी वही होगा। 2-3-4 लोग प्लेयर हैं जो इस फील्ड में भी घुसाएंगे, वो छोड़ ही नहीं सकते। आप आश्चर्य करेंगे कि दिल्ली में भी कचड़े का जो नीलामी हुई हजारों करोड़ की थी, उसमें भी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने टेंडर डाल दिया। थैंक यू तो कोई क्षेत्र छोड़ना ही नहीं चाहते जिस पर मोनोपोली उनकी रहो। और आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ये जो बिल आप पास कर रहे हैं, इसके माध्यम से आज नहीं तो कल इस न्यूक्लियर क्षेत्र में भी 1-2 बाहर के लोगों की तो होगी, हिंदुस्तान के भी 1-2 लोगों की ऐसी मोनोपोली हुई, गवर्नमेंट का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। AER भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए अभी भी वक्त है कि इस बिल में संशोधन करने के लिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजें आप, और यही मेरी आपसे प्रार्थना है, और इसके साथ में इस बिल का विरोध करें। थैंक यू प्रोफेसर। नाउ ऑनरेबल मेंबर जगेश राम जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 पे बोलने का अवसर दिया। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। मान्यवर, परमाणु बिजली को भले ही आधुनिक और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत कहा जाए, लेकिन इसके जोखिम और दुष्परिणाम किसी लाभ से कहीं ज़्यादा अधिक गंभीर हैं। परमाणु बिजली बनाने से हर स्तर पर खतरा होता है, माइनिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के रिएक्टर में उसको जलाने तक हर जगह पे खतरा होता है। 1 किलो यूरेनियम निकालने में 1750 किलो रेडिएक्टिव वेस्टेज निकलता है मान्यवर। झारखंड के जादूगढ़ा में सबको मालूम है, वहाँ पे यूरेनियम के माइन है और वहाँ के आसपास की आबादी रेडिएशन का शिकार हो चुकी है, जो भारी गंभीर बीमारियों से जूझ रही है। यहाँ तक कि मानवर तमाम परमाणु दुर्घटनाओं से हमें सीख लेना चाहिए। हमें मालूम है कि जापान की 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर इंसिडेंट हुआ, चेरनोबिल डिजास्टर यूक्रेन में हुआ, 3 माइल आइसलैंड एक्सीडेंट 1979 यूएस में हुआ, SL1 एक्सीडेंट 1961 में वहाँ पे हुआ। इसके अलावा मानवर इंडिया के अंदर भी हुआ। नरोरा में 1993 में फायर लगी जिसमें टरबाइन हॉल में आग लगी। कलपक्कम में 1987 में रिफ्यूलिंग एक्सीडेंट हुआ। तारापुर में 1989 में लीकेज रेडिएक्टिव पदार्थ का हुआ और यहाँ तक कि मद्रास में 1999 में हैवी वाटर लीक हुआ। मानवर ये घटनाएं देश में तब हुई जब देश में सरकारी तंत्र का पूरा कंट्रोल है। अगर ये प्राइवेट हाथों में पहुंचा और इस तरह की घटनाएं हुई तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। साथ ही मानवर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमाणु रिएक्टर देश में लगाने की बात चल रही, 8 गीगावाट हमारी कैपेसिटी है अभी जो भी परमाणु रिएक्टर लगे हुए हैं, 100 को लेके जाने की प्लानिंग चल रही है। अब ये बात साफ है कि भारत 4 सेस्मिक जोनों में बटा हुआ है, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, मॉडरेट एंड लो रिस्क। ये 4 जोन में बटा हुआ है। हाई रिस्क में इसको लगा नहीं सकते, मॉडरेट रिस्क में लगा सकते हैं या लो रिस्क में लगाएंगे। और जो मॉडरेट एरिया है सेस्मिक जोन का या लो रिस्क एरिया सेस्मिक जोन का है, वो पूरी पॉपुलेशन से डेंस एरिया है। अगर वहां पर इसको लगाते हैं, कोई मिस हैपनिंग हुई या टेरर से लेकर के या कोई पाकिस्तान से वार हुआ या चाइना से फ्यूचर में वार हुआ, कोई भी इस तरह की मिस हैपनिंग हुई तो एक बड़ी तबाही लेकर के आने वाला है मानवर। और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, इस तरह के जो स्टेप आप ले रहे हैं तो इसको लेकर के आप रक्षा विशेषज्ञों से, आप जियोग्राफिक डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों से, आप पर्यावरण के विशेषज्ञों से राय मशवरा लीजिए और टॉप क्लास के साइंटिस्ट जो है परमाणु एटॉमिक साइंटिस्ट, उनको बैठाइए, उनसे राय मशवरा ले करके इस बिल पर कोई गहन चर्चा करने के बाद इस बिल पर पुनर्विचार लाइए और इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का भी काम करिए मानवर। ये मेरा आपके माध्यम से कहना है मानवर, क्योंकि ये इतना बड़ा सेक्टर है, अगर इसमें जरा सी भी कोई गलती हुई तो हम बहुत बड़ी तबाही की तरफ देश को ढकेलेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर राम जी। नाउ ऑनरेबल मेंबर जगेश। Thank you for the opportunity, sir.
the name Shanti, I don't know why many of them get disturbed. In our Hindu shlokas, if we recite, we start from Om and end from Shanti. For an example, there is a shloka. Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashyate Om Shanti Shanti Shanti. That means any person, he wants to come up in his life, he fights, he achieves, he becomes big, and one day he thinks, what is this? I didn't gain anything. One thing I want to gain, that is, I want Shanti. See, the power of word Shanti is fantastic. They have kept the name Shanti for this bill, and I support this bill, sir. Sir, with a deep sense of responsibility towards the nation's future, I stand before this House to express my full support for Shanti Bill 25. This forward-looking legislation reflects the firm vision and bold leadership of our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji, under whose guidance India's energy sector has moved from chronic shortage to confident self-reliance. Sir, it is important to acknowledge the strong foundation laid by Shri Atal Bihari Vajpayee ji through the Pokhran nuclear test 1998. He built forward-looking confidence in the nation and proved the nuclear capability is essential for the national security and not deepening on others. He firmly believed that the nuclear energy should serve both defense and development. Sadly, back-to-back Congress governments failed to carry this vision forward. Sir, I will give you a small example, sir. I came from a very small village. Sir, it's agony, you don't know. When I was a student, I used to pray for the electricity, sir. Let it come. If it goes, it will come next day, sir. But today it is not like that, sir. It is only because the vision of our Narendra Modi ji. See, everywhere there is a development happening, sir. Sir, before 13, under UPA government, India suffered from weak and power cuts was common in those days. Rural families received only 10 to 12 hours of power, sir. And even cities suffered regular power cuts despite repeated promises. The UPA government added less than 7 gigawatts of nuclear capacity, pointing delays and no clear vision in the nuclear plants. Sir, after 2014, under the NDA government led by Prime Minister Modi ji, the situation changed completely. Every village was electrified. Rural India now receives 20 to 22 hours of electricity, and the urban areas enjoy 24/7 non-stop power supply, sir. This change has improved education, healthcare, industry, and digital infrastructure across the country. However, sir, India's electricity demands continues to rise due to manufacturing growth, urbanization, artificial intelligence, and data centers. Renewable energy is necessary, but cannot alone provide round-the-clock base load power. Nuclear energy, therefore, remains necessary. The Shanti Bill 25 updates outdated nuclear laws and allows limited private and joint venture participation, while ensuring that the government retains complete control over the sensitive areas such as fuel, enrichment and reprocessing and waste management. This carefully balanced guarantees safety, security and faster growth. Under Prime Minister Modi ji, nuclear capacity has nearly doubled, new reactors have been approved, and financial support for the atomic energy has increased significantly. The bill also promotes small modular reactors which are safer, faster to build and sustainable
for the different regions of India, sir. Unlike during the Congress rule, marked by the delay and doubt, this government displays strategic confidence to the nation, including Russia, France, United Nations, United States of America, Japan, work with India because they trust our Narendra Modi ji leadership, policy, clarity, and commitment. To conclude, sir, I'll give us two small examples. So when I was small, my granny and my auntie used to prepare food for us, sir. That is, now they call it millet. But for us in Karnataka, it is called ragi mudde, sir. Early morning, they used to get up, 4 o'clock, and for 20 people, they have to work 5 to 6 hours to make that food. So today, one machinery has come, sir, that prepares 100 ragi mudde in 10 minutes, sir. See, that is the development. I say, our all friends, they are still in 1947, sir. They are not going forward. But our leader is trying to make the developed India and is thinking about 2047, sir. But still they are there only. I don't know why always any good things happen in our country, there will be a big opposition, sir. So I pray for them, let God give them Shanti, 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 and let India get a developed country with our leaders' vision, sir. Thank you, sir. Thank you, Mr. Jagesh. Honorable Member Priyanka Chaturvedi. Sir, thank you so much for giving me a chance to speak on this bill. Jagesh ji was talking about how important Shanti is. But when a bill called Shanti brings Ashanti, then I stand here to oppose that bill, sir. सर हम यहाँ पर जो भी यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं इस बिल का और बता रहे हैं कैसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब होगा इस बिल के माध्यम से, मैं उन सभी से पूछना चाहूँगी यहाँ पे कितने लोग अपने गृह क्षेत्र या कार्य क्षेत्र में ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स रखने की कोशिश करेंगे? 30 किलोमीटर की रेडियस में बता दें। यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि इस टाइम की जो सरकार है, इस समय पे जिस समय में हम रह रहे हैं, कौन सी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो खड़े होकर बेखौफ तरीके से सरकार से कह सके कि जो गलत हो रहा है वो गलतियां हैं, उसका सुधार होना चाहिए? एक कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है इस देश में जो इंडिपेंडेंट होगा। सर तीसरी चीज़, ये प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की बात है। मैं प्राइवेट प्लेयर्स को भी कौन सा ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आएंगे उनको अकाउंटेबल रख सकता है? मैं सर आपका ध्यान 1984 की जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। 3,500 लोगों की मौत हुई थी, 15 से 20,000 लोग वही लीक रिलेटेड डिजीज़ में मारे गए थे, 5 लाख जो वहाँ के लोग थे, रहवासी थे, वो इंजर हुए थे, और 2 सदियाँ 3 सदियाँ बीत गई सर, वो अभी भी वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के शिकार हैं और कोई भी उसमें गिल्टी नहीं पाया गया। तो ये देश की सच्चाई है कि जहां रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, आने वाली सदियां, अगर हमने ये एक दिन में लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो गया है, इस पे चर्चा नहीं हुई है, आने वाली सदियां हमें माफ नहीं करेंगी अगर हम इसका ऑपोजिशन नहीं करेंगे और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स पुख्ता नहीं करेंगे। सर चेरनोबिल हुआ था और चेरनोबिल की एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कोट था। वो कोट था, एवरी लाई वी टेल incurs a debt to the truth. Sooner or later, the debt is paid. सर हमारी जिम्मेदारी बनती है, और ये डेट क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं? हम सप्लायर लायबिलिटी को पूरी तरीके से निकालने की बात कर रहे हैं। जो लायबिलिटी है हम कैप कर रहे हैं 3,000 करोड़ पे। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो फुकुशिमा हुआ था, फुकुशिमा के क्लीनअप में ही $200 बिलियन का खर्चा हुआ है और अभी भी चल रहा है। जो चेरनोबिल हुआ था, $700 बिलियन का खर्चा हुआ और आज भी उसका खर्चा लागू है, और यहाँ पे हम 3,000 करोड़ कैप करने जा रहे हैं, सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज हटाने जा रहे हैं। दूसरी चीज सर, ऑपरेटर लायबिलिटी भी हमने कैप कर दी है। तो किस तरीके से हम उनको पूरी की पूरी छूट दे रहे हैं? आप आइए, हमारे देश में आइए, काम करिए, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से काम करिए, पर आपकी हमारे सिटीजन्स की तरफ कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। सर आरटीआई के माध्यम से कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है कि क्या उसमें कमियां हैं और क्या कमियों को दुरुस्त करना है। आरटीआई को भी डाइल्यूट किया जा रहा है। सर आई एम वाइंडिंग अप सर।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। 3-3 मिनट में पूरा नहीं होगा सर, इसमें वाइड स्टेक कंसल्टेशन होना चाहिए, पर खैर हो नहीं रहा है। मैं बस यही कहूँगी, जो ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी है, जो बोर्ड है, उसको पूरी तरीके से मजबूत तरीके से अकाउंटेबिलिटी तय करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, हमारे देश में आकर ये लोग प्रॉफिट जरूर करेंगे, पर सिटीजन्स को के हाथ में एक लंबा चौड़ा बिल थमा देंगे, जो वेस्ट एनर्जी से लेकर, हैजार्डस वेस्ट से लेकर, और जो लायबिलिटी जान और माल की होती है, वो हमारे पास छोड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you, Tirumati Priyanka Chaturvedi. Now, Honorable Member Harshvardhan Sringala. Chairman, sir, Vanakkam. Thank you very much for giving me this opportunity to speak on this important sustainable harnessing of atomic energy for transformation, or what is called the Shanti Bill. I want to felicitate the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, for his vision, and our Minister, Shri Jitendra Singh ji, for bringing this bill for our consideration in this House. Mr. Chairman, sir, India stands today at a decisive juncture in its energy journey. The Shanti Bill is a reform that will shape India's civil nuclear sector for generations to come. This bill modernizes the Atomic Energy Act 1962, ends decades of fragmented governance, and establishes India's first liberalized, investment-ready framework for nuclear power, while firmly safeguarding national security and public safety. Sir, I want to also convey to you that in my capacity as Foreign Secretary of the Government of India from 2020 to 2022, I was an ex officio member of the Atomic Energy Commission, which oversaw the nuclear energy in our entire nuclear energy program. In the Atomic Energy Commission, a lot of the discussions were on the liberalization of our nuclear energy sector. And I'm very happy that today we are seeing the conclusion of that process in the Shanti Bill that is before us. I have to say that Dr. Kakotkar was also a member of the Atomic Energy Commission. He still is a member. जयराम रमेश जी ने कुछ उनके बारे में जिक्र किया, काफ़ी उनके बारे में उनका कोट्स भी दिए। वहाँ वो सदन में नहीं है अभी, पर मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि शायद इनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो कोट नहीं किया आपने डॉक्टर काकोटकर को। सर, जिन्होंने ये एटॉमिक एनर्जी, हमारे परमाणु ऊर्जा का मुद्दा ध्यान से फॉलो किया होगा, वो आपको बताएंगे कि हम इस बिल, जो शांति बिल है, इसके इंतज़ार में 15 साल ठहरे हैं। मतलब इसका 15 साल इंतज़ार हुआ है, और इस बिल का यही है कि 2010 में यूपीए ने, कांग्रेस ने सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट अपनाया था। इनका यही इरादा था कि ये एक्ट और इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो 123 एग्रीमेंट कहते हैं, 2005 में साइन हुआ था, इसके माध्यम से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हमारे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में आए, खास तौर से यूएस से। पर ये एक्ट में इतनी कमियां थी कि इसमें से एक फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट भी नहीं आया, और हमारे देश को एक पैसे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आना था वो भी नहीं आया। कांग्रेस के समय में इनका लक्ष्य था कि 2032 तक 63 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का कैपेसिटी हम क्रिएट करेंगे, पर इन्होंने 7 गीगावाट तक भी क्रिएट नहीं किया। और अभी हम सुन रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट न्यूक्लियर सेक्टर में ये विरोध कर रहे हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन में भी ये विरोध कर रहे हैं। शायद इनको याद नहीं होगा कि 2008 में इसी गठबंधन में विवाद हुआ था और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस के खिलाफ